And one official version was created by the third caliph, whose name is Usman, और या उथमान कही गई, जिसपे ऑटोमन एम्पायर भी है. ये सब उससे आते हैं. And he officially then announces that this is the copy of the Quran. We do not even have a copy of the Quran that was present when the Prophet passed away. We do not have anything where we can say that this is the word, this is what was said. वो जो सैटानिक वर्सेस की बात है, जिसपे सलमान रुश्दी के गले काट दिए, अंधा कर दिया, मर्डर कर दिया उसको, जिसको सब लोग जिन्होंने चाकू चलाए वो समझते हैं they will be going to heaven because they harmed a kafir. This is it. Pakistan probably and Indian Muslims are the only people who celebrated a murder or attempted murder. या आज भी हिंदू लड़कियों को अगवा करके उन्हें मियां मिट्टू मुसलमान बनाते हैं. तो जब हमारे सामने एविडेंस है कि वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, दैट आवर लॉज आर रिटन 200 years after the last man to uphold the law was alive, in a land where we didn't have a pen, we didn't know what was ink, we had not seen paper. And we are talking about a religion based on a book in which the first command of God is read. That's the first word of the Quran, read. What did Muslims do? They took that word and put it in chapter 96. None of your guests over here can answer this question. Who changed that word? The first surah of the Quran, Revelation, is magnificent. It says, God tells through the Archangel Gabriel to Muhammad, read. And then he stops and he says, read in the name of the Lord who created you from a clot of blood. It is not there on the first page of the Quran. Who changed it? इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना कैरेक्टर नहीं है कि ये एक सिंपल सवाल पूछ सके, क्योंकि कुफर का इल्जाम लगा देंगे आप दूसरे पे और तीसरे दिन घर पे आके आग लगाएंगे और सरतन से जुदा की बात करेंगे. तभी तो डरे बैठे रहते हैं आपके सारे इंडिया के मुसलमान, चाहे जावेद अख्तर हो या कम्युनिस्ट पार्टी के और लोग हो, सज्जाद जहीर हो, सबकी मां मरी रहती कि ये मौलवी कब छोड़ देगा हम पे 1000 लोग जो सरतन से जुदा करने के लिए तैयार है. Also, Tarek Fatah, no Ottoman Empire or no Mughal Emperor has ever done Hajj. हाँ, they don't. they हज कौन जाता है भैया? आपने वो मूवी में देखा ना, अकबर वो उसको भेज देता मौलवियों को कि जाइए. हज meant death punishment. Hajj was a way to send your enemies into exile because nobody came back from Hajj. It used to take about 5-6 years to get there. And by the time people settled there, they would get married to the desert Bedouin women over there because that is allowed. You can take temporary wives. And then they would settle down. इसीलिए आपको मक्का में दहलवी मिलेगा, बिशावरी मिलेगा, जहरानी मिलेगा, आपको पूरी पूरी फैमिलीज मिलेंगी जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अरब होने से. No, but Tarek Fatah, Ottoman Empire is an easy commute, right, to the Makkah. फिर भी क्यों नहीं किया? No, it is not easy, but they never went. They didn't give a damn. साउथ जो टर्क्स ने मदीना में मस्जिदें बनाई, उसके अंदर सऊदीज ने फायर स्टेशंस खड़े कर दिए, इंजन्स खड़े कर दिए. जब ट्रेन आ रही थी ना फ्रॉम जॉर्डन से टुवर्ड्स मदीना, देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द ट्रेन. आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में देखा होगा, दे ब्लोइंग अप ट्रेन्स. एट दैट टाइम थ्रू इंडियन मनी invested in Medina, because Hijaz was a different country. There has never been a country called Arabia. Najd was a separate, Hijaz was a separate country, Yemen was a separate country. और
हिजाज पे कब्जा हुआ, नजद का, under after the Turks were chased away, and then became King Abdul Aziz Saudi Arabia. तो हमें तारीख का पता नहीं, neither do we know who was doing what and where. ना हमारे पास किताब लिखी गई है कोई. You cannot find a book on the history of Islam anywhere in India or Pakistan. अफसाने जैसे लिखे होते हैं उर्दू में, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, फैक्चुअल कुछ है ही नहीं. सैयद अमीर अली ने लिखा, वो भी बेचारे डर के मारे, बिकॉज ही वाज शिया, पीपल रन फॉर देयर लाइव्स. शियाओं को क्या कहते हैं सुन्नी, कि these are Jews who are masquerading as Muslims. It's a horrible, horrible case in which the Muslims think that in this day and age they can hide all their ills and all their sins and keep on abusing other religions, and then anytime somebody critiques them, वो सरतन से जुदा. नूपुर शर्मा को सच बोलने पे ही निकाला है ना. She didn't lie about anything. She spoke the truth, so she was expelled. अच्छा, Anyway, मैं सबसे कह दूं कि सब अपना हाथ खड़ा करें, बारी बारी आप लोग अपने बारी में बोलिएगा. हाथ खड़ा कर ले जिनको बात करनी है और तारिक जी से सवाल करना है, तो एक दूसरे के ऊपर ना बोलिएगा प्लीज, ठीक है ना. जी बात कीजिए, करमपुर जी आप बात कर रहे थे. थैंक यू वेरी मच जी. तो पहले अपनी बात रखने आया था. तारक भाई आपका माइक ओपन है प्लीज. तारक भाई से पहले मैं अपनी बात ही रखने आया था. मैं सवाल तो नहीं करूंगा ऐसे. वैसे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि अरबियों का ये जो भसड़ इन्होंने मचा दिया है इधर इंडिया की तरफ, ये सारे का सारा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल हमें छोड़ देनी चाहिए. पर चूंकि हमारे जो कुछ एक स्कॉलर भाई हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अब हमें अरबियों की गुलामी छोड़ के ब्राह्मणों की गुलामी पकड़ लेनी चाहिए, तो इससे भी हमें बचना होगा. मैं करने बात वैसे आया था, करमवीर से एक सवाल लोगों ने पूछा था, मैं नीचे सुन रहा था, उसका जवाब देने आया था. वो भाई यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको प्रॉब्लम है अपनी बेटी से शादी करने में, कजन बहन से शादी करने में. अरबियों को और ब्राह्मणों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लगता उन्होंने पुराण नहीं पढ़े, ब्रह्मा और सरस्वती की शादी को ध्यान से नहीं पढ़ा. भाई लीगल है. साउथ का जितना भी ब्राह्मण है वो अपनी भांजी से शादी करता, मतलब अपनी बहन की लड़की से शादी करता, जो कि हमारे लिए बेटी के समान होती नॉर्थ के लोगों के लिए. तो इसलिए मेरी ब्राह्मणों से अपील है कि भाई तुम लोग अपनी धर्म करो. आर यू आउट ऑफ योर माइंड कि कहाँ से ये प्रोपागेंडा लेकर आते हो? भाई मैं कानून भी बता देता हूँ, इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ. यार ऐसा फिर काटोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? कोई मस्जिद नहीं है कि तुम कोई भी खुतबा यहाँ पर दोगे. कंप्लीट lie. यार कुतबा तो अभी तक तारक भाई दे रहे थे. मैं नहीं, you are lying दो शब्द about कहे this, तो आप sir. ठीक उठे हो. No, यार you are lying. ये तो फिर सच ना सुनने वाली बातें होगी ना. No, you are lying. ओके, मैं कानून निकाल के ले आता हूँ, उनको अलाउड भी है. क्या फिर इनको साउथ वाले ब्राह्मणों को करते नहीं, अपनी भांजी से शादी करते हैं. पागल हो गए हो यार. there is no separate कानून कानून for हो गया South है, के पढ़ता नहीं Brahmins. उनका. तुम पागल हो गए. पढ़ो. मैं अगर कानून ला के इधर ऊपर पोस्ट कर यार दूं तुम एक तो पाकिस्तानी हो, तुम कानून क्या लाओगे? तारिक, मैं अगर कानून ला के उधर पोस्ट कर दूं, इंडियन कानून उनको अलाउ कर. बात सुने कबीलत, आप तमीज से बात करें वरना मैं आपको निकाल दूंगी यहाँ से, ठीक है. अगर आपको तमीज से बात करनी नहीं आती, गेट आउट. दैट्स गुड. थैंक यू सो मच. सॉरी अबाउट तारिक जी, ऐसे आ जाते लोग बदतमीजी कर दी. Yeah, I mean, there is no separate Kanun, as you said, for South Brahmins. Kanun is for same for all Hindus. I don't know where this guy is pulling out the separate Kanun. Let's go to Dr. Amina. Yeah, Dr. Khan. Dr. Amia. Hello everyone. Thanks for giving me opportunity to speak here. सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही जो है वो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ अगर कोई ऐसी बात मैं कहूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं
अखलाक के दायरे मेरे की क्वेश्चन करूँ, अगर किसी की नज़रिए की या किसी की पॉइंट ऑफ व्यू की कोई बात खिलाफ भी रहे तो मैं चाहता हूँ कि वो अखलाक और मोरल के अंदर ही हो। सबसे पहले तो मेरे से पहले जिस भाई ने क्वेश्चन रेज किया था, जो वो चाह रहा था कि टू गिव अप्रूव टू द पैनलिस्ट, तो मेरे ख्याल है इतना चांस तो देना चाहिए था कि वो एटलीस्ट ये प्रूव कर सके कि व्हाट इज ही स्पीकिंग इन फ्रॉम वेयर ही इज हैविंग द प्रूफ। नहीं, वो बदतमीजी कर रहे थे ना, आपने सुना ही होगा। जी जी जी, नहीं और गलत बोल देखो, रहे थे। डॉक्टर अमिया, ये जो प्रोपेगेंडा यहूद और हनूद की सारी साजिश है, हम सुन सुन के हमारे कानों में से खून निकल चुका है। वी डोंट हैव एनी मोर पेशेंस। कुछ ओरिजिनल बात कीजिए जो तारिक डॉक्टर साहब फतेह, अपनी बात कीजिए जो आप हाँ, कुछ तारिक फतेह जो जवाब दे सके, उनके लायक, उनके लेवल की कोई डिस्कशन वो बात कीजिए। या हनूद और यहूद की कहानी प्रोपेगेंडा आप अपनी मस्जिद में फैलाइए। बिल्कुल, मैं अखलाक या कोई इस तरह से उसकी तरीका शायद गलत हो, बहरहाल मैं उस पे नहीं जाना चाहता, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। रही बात जो तारिक वती साहब कह रहे कि तारिक वती साहब से खुद मेरे पर्सनली जो है वो इस चीज़ पे मैं उसके साथ एग्री नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बातें जो सर ने कही है। फॉर एग्जांपल सर कहते हैं कि ये कुरान में कहा लिखा गया है कि फर्स्ट पेज पे इकरा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है कुरान का वो इकरा है। मैं सर की जो इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि कुरान की जो 2 तरह से जो है उसकी प्रिंट हुई है, या हर सूरत के स्टार्ट में जो है वो 2 तरह से उसको लिखा गया है। एक होता है जब वो कुरान नाज़िल किस तरीके से हुआ है और लिखा किस तरीके से हुआ है। जो नज़ूल की बात होती है वो नंबर भी लिखा होता है, और जो लिखने की बात या लिखने या प्रिंट होने की जो एक प्रोसेस होती है, वो भी साथ में लिखा होता है। फर्स्ट पेज पे आपको शायद वो नज़ूल वाले या जो रियल फॉर्म में नाज़िल हुआ हो वो ना मिले, लेकिन वो नहीं, वो मिल लिखा गया। भी। मैंने अभी चैट में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। क्यों नहीं? रेवलेशन, ऑर्डर ऑफ द रेवलेशन मिल गया नहीं है। नहीं नहीं, ये क्यों नहीं होगा खान साहब? ये मुझे बताइए कि क्या जरूरत पड़ गई किसी को ऑर्डर बदलने की? ऑर्डर 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 उस पे शायद लिखने में जो है वो बदली हो, लेकिन वो हाँ, ये लेकिन भी किसने किया भाई ये? सर, जिसने सर लिखा है ना वो मेरे भी। भाई, एक बात सुनो। जी पहले जी हम कहते हैं कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जी और जी पहले वर्ड पे मैं आपको बता रहा हूं कि चेंज हुआ। जी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 300 कॉपियां उस्मान ने जला दी, अच्छा राख जी कर दी, खुद जी। बनाया और फिर उसको जारी किया। हर अ, फौज के साथ एक कुरान जी शरीफ की जिल्द जाती थी, जो हजरत उस्मान के जमाने में लिखा गया और जी अरेंज किया गया। वो जी 300 कॉपी जो उन्होंने जलाई, वो कहाँ जी। जल वो किधर से आई भाई? अच्छा, अभी अगर मैं इस बात की जवाब दे सकूं, इसकी भी और एक दूसरी बात की भी मैं उस पे आ रहा हूँ। जरूर। ये जो धारिफती सर, और ये जो हम दोनों शायद अरबी न होना, जो एक अरबी होता है जिसको ग्रामर का पता होता है, वो एक नॉन अरबिक को उस चीज का इतना पता नहीं होता। रियल अरबिक जो है वो उनको जेर जबर अरे पेश। कहाँ की बात सर कर रहे हो सर यार? सर, मेरी मैं मेरी कह रहा बात हूँ पूरी चैप्टर सुनिएगा चेंज आप। कर दिया आपने, आप कह रहे हैं जेर जबर। सर मैं आपको पूरी बात आप बता रहा मुझे हूँ, क्यों समझे आ रहा हूँ। जलेबियां खिला रहे भाई? सर मैं मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि लफ्ज इकरा चैप्टर 96 में कैसे चला गया? सर आप ऐसे करें कि लफ्ज इकरा के सूरत शुरू होने से पहले आप उसकी पहले वाली डिटेल पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। पढ़िएगा, मैं बता पढ़ा है मैंने। उसमें बताइए क्या, क्या है? उसमें उसमें फर्स्ट लिखा है नजूल के नहीं। नजूल नहीं। सर फरिश्ता आप जब आया है, उसने सर आप जिब्राइल जब अलैहिस्सलाम ने सर आप रसूलुल्लाह जब का। सूरत का सर जब आप इस सूरत का जब स्टार्ट होता है तो उस पे ये बताया इस सूरत में कितने आयात है, यार कहाँ किसने पे। बोला आपको ये? कैसे मैं अपने घर में स्क्रीनशॉट बना मैं रहे हैं आप स्क्रीन लोग इस्लाम? सर मैं स्क्रीनशॉट अभी के अभी लेके आपको क्या सेंड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट दोगे यार? सब की सब जो को होस्ट है उसकी प्रेजेंस में मैं 2 सेकंड मुझे दीजिएगा
कि मैं उसकी पिक्चर अगर मुझे आप अलाउ मुझे करे। पिक्चर बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं आप? सर मैं आपको, आप कह रहे पहला हैं ना कि वर्ड किसने कहा, कुरान मैं का। आपको दिखाऊंगा कि किसने कहा। अरे भाई आपको सबूत चाहिए ना सर। मुझे सबूत नहीं चाहिए, मैं आपको आपको क्या कह रहा चाहिए हूँ फिर? कि आपको झूठ सुनने और बोलने की आदत हो गई मुसलमानों को। सर पहले अच्छा, अब दूसरी बात है, मैं आता हूँ कि ये जो सर तन से जुदा वाले करने बात आप करते हैं ना, मैं जिस शहर में रहता हूँ सर, उस शहर का नाम है चमन, जो कि चमनदास के नाम से आबाद है। हाँ मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर की आबादी 7 लाख है। हाँ इस 7 लाख की आबादी में अब भी रोड जो है वो जो गिराम के नाम से है, वो अब भी सनातन रोड के नाम से है, वो अब भी माल रोड के नाम से है, वो अब भी ट्रेंच रोड के नाम से है। इससे क्या प्रूव मेरे होगा? इससे प्रूव क्या होगा कि उस 7 लाख की आबादी में आप खुद बताइएगा कि कितने मेरे हिंदू बिरादरी होगी। वो तो सब खत्म कर दिया आपने। सर आप मुझे ये बताया, अगर हम आबादी खत्म करें भाई ये पख्तूनों का आपने पेशावर शहरी हिंदुओं का था, सर खत्म कर मेरी दिया ना आपने। सर, तो अब हम ये रोडों के नाम पे खत्म नहीं कर सकते हैं। अरे आप कर कर दो, क्या सकते हैं। फर्क पड़ता है? आदमियों को मार दिया, रोड की बात सर कर रहे हो? कमाल आप कर रहे हो, मुझे पूरा मैं भगवान स्टैचू मैं तो तोड़ दिया सर तुमने। सर मैं तो पेशावर की बात कर ही नहीं रहा। अरे यार खुदा के वास्ते, क्या मैंने मैं तो चमन जब मैंने कुरान मैंने की बात हो रही तो आप चमन की बात कर रहे हैं यार। सर नहीं नहीं, बलूचिस्तान आप से निकल सरतन से मुझे। जुदा वाली करने बात पे आया हूँ। वो तो आप मान ही नहीं रहे कि मैं उसकी स्क्रीनशॉट प्रेजेंट करूँ 2 अरे मिनट में, यार मुझे जिसमें जाने दो भैया, करम जी 1 कहाँ मिनट बुला लेते हो। उसको मैं अरे अभी नहीं करता नहीं, हूँ, that's मुझे इजाजत important मिली यार। है। अबे you're not understanding the speaker, you know. Tariq sir believes in you. You have to tell him what you're saying. You can quote the source. Just tell me He's why, not where he's is not it? being skeptical of you. He has opened his mind and heart to you. He believes in you, but you have to come up with the source. We're not looking for Exactly, tangible evidence here. Tell exactly. me. I'm gonna come with source. Yeah, आप just मुझे say what अगर say this. What are Just you talking about यार, क्यों सर जलेबी भेजते हो? सर Will you come the मैं भैया? उस पे भी आता हूँ ना, ये जो सर तन से जुदा वाली करनी बात है ना, अरे मैं जिस शेर की बात आपसे कर रहा हूँ ना, अगर मुझे एक भी बंदे what की he's saying, sir, is there is still some remnants of secularism in सर Pakistan मेरे or other नहीं place. नहीं नहीं So सर that मैं अरे साथ Sanatani भैया, concepts are तालिबान not प्रोड्यूस lost. करने के बाद भी चैन नहीं आया है। सर इमरान आप सब खान जाके के चेक कीजिएगा, आप सब जो मेरे मुअज़्ज़ज़ जो होस्ट है यहाँ के, जो स्पीकर है, मैं आप चमन गूगल में चेक कीजिएगा भाई और फिर मैं अरे वली आप वहाँ गूगल पे पर पार्टी छोड़ का दीजिए, मेंबर एक हूँ। मिनट जी जी सुने चमन को डॉक्टर अमिया जी जी, जी आप जी एक बात सुनिए। चमन गुगे को छोड़ दीजिए, आपने अपना कुरान अपना दूर दूर क्यों जा रहे हैं? अपना कुरान तो आपने खुद पढ़ा भी नहीं है। आप जो है सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं कि रॉन्ग है। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि जो है उनकी नेकों पे, उनकी गर्दनों पे स्ट्राइक मारो, और जहां ऐसी मिले बहुत सारी वहां मारो, रेफरेंसेस हैं। जहां मिले जहां पे मारो, उनकी काफिर मिले उसे गर्दनों मारो। पे स्ट्राइक करो। जी अब बिल्कुल। अब अब मैं अपनी तो बात आप अपना पूरी कर कुरान तो सकूं पहले मैडम? पढ़ लें, और जहां तक आपने रेवलेशन की बात की थी, ऑर्डर ऑफ रेवलेशन, उसका लिंक मैंने चैट में दे दिया है। आप पहले वो जाके देखिए, फिर आके बात कीजिए। आपको अब खुद मैं इल्म नहीं है। अब मैं अपनी बात जो है वो पूरी करूं मैडम जी, अगर आपकी इजाजत हो। करें नहीं, यार। आप तो बात इधर से इससे उधर पहले जंप कि कर रहे हैं मुझे ना। इससे पहले कि मुझे आप निकाल लिए, मैं अरे आपकी भाई बात की चमन जवाब कहाँ दे से दूं। आ गया बीच में? नहीं तुम नहीं नहीं, ये सर बलूचिस्तान की आजादी में बिलीव करते हो? डू यू बिलीव के बलूचिस्तान पे कब्जा मैं किया हर पाकिस्तान ने? सर मैं ना पाकिस्तान ना की ना ना, आपकी बात आप चमन से है ना, मैं अब आपसे बात करता हूँ। जी जी मार्च 1948 में पाकिस्तान फौज जी ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया। जी आप मानते हैं कि कब्जा किया? सर मैं जवाब दे दूं इस बात की? बोले। मैं हर उस कब्जे की, मैं हर उस भाई मैं अमल, उस बलूचिस्तान एक्शन की की, बात कर रहा हूँ, बाकी मैं इधर हर उधर उस की एक्शन की मजम्मत जलेबी करता मत हूँ दे बेचे मुझे। सर। आई मैं वॉन्ट यू टू उस टेल बात मी। की मजम्मत करता हूँ जिसमें एक इंसान अरे की यार आजादी यार, ये क्यों ऐसी मजरूह हो, गंदी बातें चाहे वो करते हो? बलूचिस्तान में हो, चाहे आई वो डोंट इंडिया वांट के यू टू किसी गिव। कोने में हो, अरे चाहे भाई अब कहीं बस भी करो हो। झूठ आप अपना। पॉजिटिविटी फैलाइए सर। मैं आप पॉजिटिवली कह माशाल्लाह रहा हूँ, से आप झूठ बोल रहे हैं 100 आदमियों के आप सामने, एंड आई शुड एक्सेप्ट दैट। आई वांट सर, यू टू मैंने टेल कौन मी सी ऐसी दैट बात, मेरी एक बात बताइए। Balochistan was occupied by Pakistan military invasion. Balochistan got an independent state
on August 11, 1947, and you invaded that country and occupied it and massacred tens of thousands of Baloch over there. और चमन जो आप कह रहे, आपने अफगानिस्तान के अंदर जो बलोच एरिया है उसके अंदर आपने मुखबरी करके पकड़वाया लोगों को। जैसे कि कौन से एरियाज? सब पूरा आपका जो अफगानिस्तान पे था तो वो सारा बलोच एरिया। आप मुझे एक एरिया बताए जो कि आपको पता हो अफगानिस्तान की बलोच एरिया। अफगानिस्तान के अंदर बलोच एरिया नहीं है सर, आप मुझे जिस पे हमने अरे it is लोगों the को only मरवाया है, country आप जहाँ मुझे बलोची लैंग्वेज is one of the national languages। सर आप मुझे बताए ना। मैं आप चमन में रहते हैं, आपको नहीं हाँ, पता मैं है कि रहता हूँ। बलूचिस्तान कहाँ है? सर मुझे पता है, तभी तो मैं तो आपसे फिर पूछ क्या रहा हूँ कि आप पूछ आप रहे हैं मुझे मुझसे? Sir, मैं why आपको are you एक बात bashing ना, each other, guys? Okay. no, Yeah. I सर want you आप to मुझे answer the एक question एरिया you बताए think। ना, आप बात को ना घुमाए प्लीज। अरे घुमा नहीं रहा हूँ, I don't need to तो आप cater बताए to ना the सर। I bullshit। think there's a Okay, split मकसद here. ही Let's move on. Priyanka, let's move on. सर मैंने कहाँ आज से से लेके एक आते हैं बात। भाई अच्छा आप चलिए लोग? ठीक है, डॉक्टर अमिया जी, योर टाइम इज अप नाउ। आप चले जाइए, आप आपने बात कुछ की श्योर, नहीं है, आप होस्ट है, आपने बात कुछ की आपके नहीं पास है, ना पावर ही है। आप लोग को कोई बात समझ में आ भैया रही आप है। ऐसा है कि लोग कहाँ आके बैठ थैंक यू जाते हो सो मच। यहाँ? जाओ हाँ, कोई अपना काम करो, पाकिस्तान फौज बुला रही है तुम्हें। भाई उमेर, ये कोई जाओ मुशर्रा का मुखबरी करो कंपटीशन पाकिस्तान नहीं हो, की। ये कोई मुशर्रा का कंपटीशन नहीं हो रहा यहाँ। सवाल जब लॉजिक से आप सवाल पूछे जो हाँ, समझ में आए। हमें चमन में लेके जा रहे हैं, वो चमन गाने बताइए। भी याद आ रहे हैं मुझे चमन के। खैर एनीवे, हम किसका हाथ खड़ा हुआ है? स्पीक जी, आप बात कीजिए, स्पीक हाँ द जी, ट्रुथ हाँ जी। जी, देखिए, बात कीजिए। मैं वापस देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हम जैसे तारिक फ़तेह साहब बात कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, इस्लाम की बातें। बट एज़ ए हिंदू एंड इंडियन, हमारी जो मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो ये होती है कि इस्लाम में जो काफ़िर को इंसान का दायरा नहीं दिया गया, उसकी कोई औकात नहीं है, उसको मारने से कोई अल्लाह के सामने कोई गुनाह नहीं होता। मेरे हिसाब से सारे प्रॉब्लम की जड़ इस्लाम में जो नॉन मुस्लिम है उसको जो इंसान का दर्जा नहीं दिया गया, उसके साथ हर तरह का जुल्म माफ है। दैट इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। जब तक उसको अगर हम ठीक करेंगे, अगर काफिर को इस्लाम में एक बराबर इंसान का दर्जा मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरा ये कहना है। सर देखिए, जब तक 2-3 लफ्ज हिंदुस्तान की जबान से निकाल नहीं जाएंगे आपको चैन नसीब नहीं है। एक है काफिर, दूसरा है जिहाद और तीसरा है शरीक। इफ यू कैनॉट एक्सपंज दीज वर्ड्स यू विल बी ब्लेड टू डेथ। आप पे 800 साल लोगों ने इन्वेड करके ऑक्यूपाई किया है। ट्रस्ट मी, आपके अंदर लोग बैठ के आपको ऑक्यूपाई कर लेंगे और आप इसी में रह जाएंगे कि यार इंडिया की इकोनॉमी ठीक चल रही है, ये चल रही। भैया, योर एनिमीज डोंट वांट एन इकोनॉमी, योर एनिमीज वांट डेथ, बिकॉज उनके बिलीफ में ये है कि जिंदगी शुरू मौत के बाद होती है। राइट। तो once you have to challenge and help those Muslims in India who want to fight against the mullahs। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कोई ऐसा। वो बेचारे, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, उनके पीछे पड़ जाते हैं मौलवी। आप समझते हैं कि वो मुसलमान जो पहले हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं या अपने आप को पहले हिंदुस्तानी और फिर मुसलमान करते, उनके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी आपने। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर को मौलवी बैठा हुआ एक आदमी। ये जो ऊपर से नजर आते हैं ओवैसी वगैरह, ये जमीन में 10 फीट नीचे और भी हैं, भरे हुए हैं। Yeah. So you have to stand up and build a Muslim platform which is primarily loyal and considers himself first Hindustani, then Muslim. If the order is changed, your country will be destroyed from within. धीमक समझते हैं ना आप क्या है? I know. Though this is termites. ये तो आप बताइए कि जहां मुसलमान को जीना नहीं छोड़ते, जब शियों को मार रहे हैं आप। 5 लाख यमनी को मार दिया है पिछले 10 साल में। सीरिया के अंदर तबाही मची हुई है
कुर्दिस्तान पे कब्जा तुर्की ने किया हुआ है, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने किया हुआ है, मोरक्को ने वेस्टर्न सहारा पे किया हुआ है, इंडोनेशिया अफगानिस्तानियों को भी मार रहे हैं ना तारिक जी, सबको मार रहे हैं ना। वेस्टर्न इंडोनेशिया ने वेस्ट पापुआ पे कब्जा किया हुआ, 70 साल हो गए, लोगों की कोई जबान नहीं छोड़ते। फर्स्ट थिंग दे डू इज दे प्रोहिबिट द स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज और राइटिंग इट। यहां तक के मुसलमान पंजाबी जो जहालत में डूबे हुए हैं, उन्होंने अपनी जबान पे पाबंदी खुद लगाई है, और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं कि शर्म आ जाती है, खुदा की कसम। पाकिस्तान, ये दे कांट प्रोनाउंस देयर ओन कंट्रीज नेम। यहाँ आके बता रहे कि चमन में रहते। पंजाबी बोलते हैं सर, यहाँ पे हर किस्म की पंजाबी बोलते हैं। आप कब आए हैं पाकिस्तान? कौन बोलता आई है लिव इन पंजाबी? कौन ऐसी बोलता पंजाबी बोलते हैं जैसे जो ए इंडिया वाले भाई, बोलते हैं, एक हरियाणवी भी बोलते हैं सर। ए क्या करते भाई, हैं? यू शो मी वन टेलीविजन शो व्हिच इज इन पंजाबी। तुम्हारे टेलीविजन बच्चों शो को पे नहीं आता होगा, वैसे तो बोलते क्यों हैं नहीं लोग आपस आता? में क्यों नहीं? ये आपके 70% ऑफ योर पंजाबी पॉपुलेशन इज पंजाबी स्पीकिंग। व्हाई आर यू एम्बैरेस्ड? क्यों कहते हो कि पंजाबी चूड़ियां दी जुबान है? सर कौन बेगैरत कहता है बेशरम पंजाबी? लोग। पंजाबी इधर 9 करोड़ है सर, कौन उनको जो है ना, वो तो जो है ना अरे मेजोरिटी में है। भाई, वो खुद उर्दू बोल बोल के कभी आपने देखा है उर्दू उर्दू पंजाबी भी में बोलते हैं सर, लेकिन पंजाबी बोलते हैं सर। फैसलाबाद में अरे बोलते हैं, झंग में क्या बोलते हैं, हर बोलते मुल्तान क्या में होगा? बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। अच्छा, नशा करके या बीवी को मारते हुए बोलते होंगे? और आई और नेवर सर हर्ड अ सब नहीं करते पाकिस्तानी। ऐसे, ना ओ सारे टेल नशे मी, करते हैं, ना सारे यू बीवियों को नेम मारते मी, हैं। ए भाई, आप you name me जी, one politician in 75 years who's given a speech in Punjabi. Name me one. लोकल देते हैं सर, लोकल में भाई देते हैं। चलो लोकल क्या कह लोकल रहे हो से तुम? पश्तो में। अरे दूसरा आप अरशद सर जो है भाई, ना पश्तूनों की बात करते अरशद बढ़ते I हैं। भाई, एक don't मिनट, want to एक talk of मिनट। Pashtuns. I'm मैं talking of 70% अच्छा of the देखिए आई एम population. अरशद पश्तून जी, सर। देखिए बात सर सुने, देखें, बात सुने। आप यहाँ पे ना 101 ऐसे आर्ग्यूमेंट ना कर सके। देखिए प्लीज रिस्पेक्ट तारिक जी, ओके? वो यहाँ पर टाइम निकाल के आए हैं, और आगे और भी लोग हैं, उनको भी कुछ सवालात हैं सारे। तो आप बिल्कुल एक ही उस पर लकीर के फकीर ना बने, और ये कि तमीज से बात करें प्लीज। अपनी बात खत्म करके आप म्यूट कर लीजिए, उसके बाद दूसरों को भी चांस चाहिए। ये फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पश्तूनों के साथ यहाँ पे ज्यादती हो रही है। आई एम अ पश्तून फ्रॉम द मोस्ट बैकवर्ड एरिया एंड आई वाज कर्नल इन द आर्मी। आई हैव स्टडीड इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, नोबडी स्टॉप्ड मी। प्लीज आप ऐसे मत करें जनरलाइज। ना बलोचों पे जुल्म हो रहा है, ना पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, ना अरे पंजाबी पे बलोचों जुल्म पे हो रहा है। कितना जुल्म हो रहा है, आज रात को मेरे आपने चैनल बलूचिस्तान पर है, देखा आज है? आप सुन लेना आके। आपके चैनल ने जो तो ये जो फैलाया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं नहीं, हो चैनल रहा। पे आई डोंट नहीं, नो ये विच वाला वर्ल्ड यू आर चैनल लिविंग नहीं। इन। आई एम अ पश्तून यार, क्या अच्छा हो गया? चलिए, बात सुने, Oh, फिर आई हम you लिव बात इन put करेंगे। पंजाब। Ghaffar Khan in prison for 17 years. Ghaffar बेगैरत Khan was लोग। a traitor. He He was a was a traitor of traitor. Pashtun. बात समझ He was आई a है fucking आपको? traitor of Pashtuns. ये He गफ्फार ruined खान Pashtuns. was a He traitor. ruined Pashtuns. अरे He जाने made दो। the madrasa. He और छोड़ो। built the first madrasa. He was a Oh, fucking what is wrong with the traitor. madrasa? You are the one who wants to say कि मैं वो पठान हूं जो बड़े होके पंजाबी बनूंगा ताकि मुझे नौकरी पक्की मिले। बेगैरत बेशरम लोग, अपने ही लोगों को मारा आपने। ड्यूरेंट लाइन तुम्हारी लाइन है क्या? पठान बनते हो? कौन सी ड्यूरेंट लाइन ड्यूरेंट किसकी लाइन है? लाइन? कौन सी ड्यूरेंट लाइन है? अच्छा जी, गुस्सा न करो। अच्छा जी, गुस्सा न करो। आई थिंक यू विल हैव बेटर पॉइंट्स। बेगैरत लोग आईएसआई के पठानों को मरवा दिया, 1 यूनिट सेलिब्रेट किया इस टाइप के लोगों ने। तारिक साहब, गुड मॉर्निंग। अरे don't throw, don't put him down. I mean, Why? no, वो Man चले works गए। for the ISI. I will not put him down. वो भाग It is गया क्या illegal अरशद? that he should kill No, them. he went on his own. Okay. He went He on his own or humiliated somebody the removed people him? of Hindus as his No, joke. he's on. I don't know. He's on. So अपना सबका रेज हैंड कर दीजिए ताकि आसानी हो जाए बात करने में बारी बारी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। Let's go to Rahul ji. Yes, raised hand. Yes, Rahul ji. Namaste, Tarek Fateh sir. Just I'm trying to put the question in a very brief, very small, quick and brief. That we have heard like so much of problems, like atrocities and the flaws in this fake cult. But what is the solution that you think? I know you've been a great scholar, and you spent like so many years in doing some great research, and you came to conclusion that the Sanatan Dharma
is so peaceful, and you wanted to even come back to India and even ready to take Indian citizenship, and you really embraced our culture. And Look, bhai, please, the Indian Constitution and the universal rights under UN guarantee everyone the right to choose whatever religion they wish to. That is their right, and they should have that. And that's the greatness of the Indian Constitution. But if your premise is based on hate, and your belief is that till India is destroyed, Yom Qayamat nahi aayega, so then I have the damn right to say that you are unworthy of living in India. You pack your bags and get the hell out of there and go to Pakistan. Because you are the ones who made Pakistan. The people, Urdu speaking people of UP, Bihar, Madras, and Bombay, and all that. The people of Sindh and Punjab and frontier did not want Pakistan. Balochistan was independent. Frontier had a Congress government. जिसको अभी एक पश्तून कह के गया गफार खान को कि traitor. Can you imagine that? And Muslim League only won in Bengal and the majority of seats in Bihar, UP, Madras, जो CP कहलाता था उस जमाने में वहां उन एरिया में. Today the situation is that if Muslims who adhere to the Constitution of India and consider themselves primarily Indian and then Muslim or Hindu, they need to be strengthened by a process which only the federal government or the central government can facilitate. But unfortunately, the Babus of India, which is the elite commandos that run this country, hello, sorry, okay, so bhaiya kya, anyway, they are unwilling to put any Muslim who is primarily loyal to India in a leadership position. So everyone gives the right for Owaisi to muck up hatred against Hindus. Everyone allows your auntie, many of the middle class aunties that are in journalism and are anti-India and who are Muslim, and the academics in North America who are anti-India, they are facilitated. Nobody allows people like, I know so many Muslim women in India who are absolutely 100% Indian by their belief system. Amber Zaidi jaise hain, wo aapki, I keep forgetting names, but there are so many. I know about 100 of these people, but they do not have the power to create a platform. मौलवी तो मस्जिद से बना ही लेगा ना, उसके पास तो वो दियोबंद भी है, बरेली भी है, पता नहीं अहले हदीस भी है. ये जो लोग इंडिया की भलाई चाहते हैं मुसलमान, उनके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है. Even when the prime minister wants to meet, he meets ugly Muslims. आपकी शक्ल ठीक हो, आपसे कोई नहीं मिलेगा. बोले ये इतना जब तक हम अगली ना हो, हमें कोई मानता ही नहीं मुसलमान. पजामा ऊपर हो, टोपी टेढ़ी हो, खुजा रहा हूं मैं अपनी बैग के अंदर, पीपल विल से हाँ ये सच्चा मुसलमान जा रहा है. देखो, नाक में उंगली डाली हुई है, कान के अंदर स्कूटर की चाबी से कान साफ कर रहा है, वो होता है जेन्युइन मुसलमान. बाकी जो ढंग का आदमी है उसे आप कहते हैं यार ये मुसलमान लगता नहीं है, ये तो ठीक ठाक कपड़े पहने हुए घूम रहा. सो टिल यू फिगर दैट आउट, allow secular, liberal Indian Muslims who consider themselves first and foremost as Hindustani and recognize that this land is called Hindustan. ये नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान को उड़ा ही दिया क्या, भारत दैट इज इंडिया. बताइए कितना प्रेशर होगा. The historical name of this place where everybody knew is as Sindh Hind, आपने हिंदुस्तान तो हटा ही दिया ऑफिशियल नाम से. खुश करने के लिए मौलाना आजाद को नेहरू जी ने कहा चलो भैया जो करना कर लो, राजा दाहिर को भी उड़ा देते हैं और हिंदुस्तान को भी उड़ा देते हैं.
तो ऐसे तो आपने हालात क्रिएट किए हैं कि बाजू भी कट गए हिंदुस्तान के, लाखों लोग मर गए, जेनोसाइड भी हो गया बांग्लादेश में। उसके बावजूद सुख और चैन नसीब नहीं होगा आपको, क्योंकि जो लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि हिंदू एक काफिर है जिसका खात्मा करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये पत्थर की पूजा करता है, हम जाके किसी पत्थर की पूजा करें मक्का में जाके तो हम तो हो गए ठीक, लेकिन हिंदू अपने घर में अगर पूजा करता है तो कहते हैं इसको तो मार दो। तो अब या तो रिसर्जेंस हो उन लोगों की जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो पाक टू नेशन थ्योरी को डिनाउंस करते हैं, वो कहते हैं जिना की तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हटाओ, वो तो काम ठीक करेगी। लेकिन But आप देखते हैं do you realize the practical difficulties with that, why sir? How do you they, unhinge a community I'll tell from you how. Quranic belief system? I mean, I'll tell you how. yeah. You take me, get me a visa, take me to Aligarh, and I'll smash the damn picture of that horrible man, British agent who slaughtered India. आपको अच्छा लगता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना उसके सूट महंगे थे, तो वो तो इंडियन कॉम्प्लेक्स, हर इंडियन को कॉम्प्लेक्स है कि यार गांधी जी धोती पहनते थे और जिन्ना इतना अच्छा सूट पहनता था, तो मर जाए, डूब मर जाए उसी के अंदर। बाजू कटवाने के बाद भी आपको होश नहीं आया। लोग कहते 26/11 पे कुछ और नहीं दूसरा इंडिया वो ने, नेहरू से भी अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसका काम ही क्या था? एक आदमी दलाल है अंग्रेज का, वो तो अंग्रेजी बोलेगा ना। He was Sir, sent from the UK for you're visceral, I'm you not know, not visceral. hate. The man caused 1 million deaths in India. And then he tells That was नेहरू a जी, ये that was a सुने grim आप, tragedy. ये Yes. सुने, जी जी। नेहरू जी को कहते हैं एक खत में कि मेरा बॉम्बे वाला घर किराए पे दे देना जवाहरलाल, बट प्लीज मेक श्योर कि उसमें को इंडियन ना रहे, यूरोपियन को देना, क्योंकि इंडियन बड़े गंदे होते हैं। यू गाइस डोंट नो अबाउट दिस। ही वांटेड टू डू Here is the interesting part. I या have to tell you, they might be very seasoned and bright, intelligent, or deep people, but they were very naive in terms of their thinking. हु The initial proposal to carve out Pakistan was several bubbles within यस the आई Indian नो दैट, landscape. That was a strange thing, like one भैया pocket here. Yeah. that was a thing of the Indian indigenous population. The borders of Pakistan were determined in the United Kingdom after the Second World War. जी जी जी। आप तो लगे हुए थे नेताजी के पीछे हिटलर को सपोर्ट करने, Yeah. राइट? लेकिन Yes. जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था वो तो मुसलमान था, आप तो नहीं थे ना। आपकी तो सीपीआई उस वक्त तो एक ही सीपीआई थी, Right. चल रही थी। You're right. हमारा तो हम तो we are like those prophylactics that are used and then thrown out because the Muslim is by nature ordered कि सबसे पहले तो दहरिये को मारो। दहरिया होता है द नॉन बिलीविंग, वो तो होता ही कम्युनिस्ट है, इसीलिए ईरान में 50,000 कम्युनिस्टों को मारा। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या किया, लोगों को टांग के मारा। नजीबुल्ला के साथ क्या किया, उनकी बेटियां तो अब इंडिया में ही रहती है शायद, हर जगह तो वो अमेरिका और बर्तानिया ने इस्तेमाल किया अगेंस्ट द But sir, सोवियत एक बात बताओ मुझे, why do you have such a low expectation? I mean, why do you यूनियन। undervalue Pakistanis or the Muslims generally of this They South don't Asian have region? an identity, bhai. Do you know of No, any but people sir, who prohibit why their can't? language? No, but that's fine. But people have a right to change and No, they evolve don't or have a right practice it. to kill people. ये क्या बात That है, I कहाँ agree से with लाए हो you. तुम ये? No, but that I agree with you, sir. हाँ, तो फिर who brought Urdu But as do a you, national language of Pakistan? no, but do you really Who the believe that fuck the brought Urdu to Pakistan when sir? nobody spoke Urdu in Pakistan? What's wrong with Urdu, sir? Nobody There's spoke nothing wrong Urdu with. in Pakistan. There's nothing wrong with Urdu. It is a I love Urdu. language in which you can lie with No, it complete is a great azadi. language. There is No, so much it is literature. not गालिब my है उसमें, मीर language. तकी मीर है, My हम पढ़ते language, हैं उसको. I don't give a fuck if it was Mir Taki Mir or not, he's an Indian. My language was Bangla and Punjabi.
and you prohibited Bangla's पश्तो भी है सर, यहाँ की लैंग्वेज पश्तो क्या है, है? बलोच है, सिंधी है। बलोच है, उर्दू नहीं है। उर्दू कहाँ से आ गई हमारी जबान? सर उर्दू हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है ना, हम उसको कैसे बोलते हैं, कॉमन हमारे लिए आसान लैंग्वेज है है? टू कम्युनिकेट विद ईच You अदर। don't communicate with anyone. You Bastardized consider Mughal people who language. don't speak Urdu as illiterate. इसीलिए आपके दिल्ली में मुशायरे होते और बड़े वो हाथ में लोटा मुंह में पान और लेके आप जाते हैं शेर शायरी करने के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है, एनीबॉडी हु स्टार्ट स्पीकिंग उर्दू लोग समझते को फलसफे की बात कर रहा, चूतिया बनाया हुआ सबको। दिल्ली के अंदर गाजियाबाद बना दिया कि हम आए थे हिंदुओं को मारने और हमने मार के जिंदा रहे, इसीलिए हमारे नाम का गाजियाबाद है। कैन यू इमेजिन दैट? आपने बाबरी मस्जिद बनाए रखी वहां अयोध्या के ऊपर, आपके हजारों मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिदें बनी But sir, हुई। but why do you blame the present Muslims for all the Oh, old he's atrocities? Arshad is a present Muslim. नहीं सर, तो वही तो बता रहा ना, वो why उसकी do रूह you hold थोड़ी their बोल feet रही to the है। fire? I mean, he भाई has अब nothing to लाओ do ना with it. इधर और anyone, मुसलमानों sir, को मैं बताओ किसी कि को भी अगर नहीं तुम्हें मारना पाक चाहता हूँ। नहीं, अरशद जी ने मैं किसको, किस ये he's not Babar, he's भाई not क्यों नहीं Tamerlane. कि थ्योरी में बिलीव करते नहीं करते? अच्छा तारिक बिलीव सर, करूं तारिक ना सर करूं हो गया है ना। एक सेकेंड, अरशद साहब, तारिक सर, अभी जामा मस्जिद के, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम ने फतवा जारी किया है कि विमेन्स आर नॉट अलाउड इन द हाँ, मॉस्क, हाँ, whom to blame, जैसे करमवीर जी कह रहे हैं। हाँ। तो उसमें फिर जो पाकिस्तान के जो 3 इमाम हैं, अभी उनका नाम आया था न्यूज में, अरे उन्होंने, पाकिस्तान इमाम नहीं है बहन, हाँ, चूतिए। उन्होंने भी इंडोर्स किया कि ये सही किया बिल्कुल। गया। तो सर इसमें आपका क्या कहना है, मतलब अब कि भैया जब आप मस्जिदों मदरसों में बच्चों के साथ रेप करने में मजा नहीं आता हो, तो फिर आपको लड़कियां देख के मजा आता है। और आपको मस्जिद में जब औरत नजर आती है तो आपको नमाज, रोजा, हज ये नहीं यकीन आता, आपको ये होता है अभी देखो लौंडिया जा रही है। भैया पुरानी दिल्ली में क्यों हर औरत ने बुर्का पहना हुआ होता है? क्योंकि उसके मर्द को ये डर होता है कि भाग गई किसी और के साथ। ये शर्मनाक बात है कि औरतों को आप एक टेंट में कवर कर रहे हैं अंडर इस्लाम, और मौलवी कह रहा है कि मस्जिद में आई तो हमारी वो सेक्सुअल अराउजल हो जाएगी। अबे मक्का के अंदर हज कर, काबे के अंदर औरत जा सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, क्योंकि इमाम बुखारी साहब जो हैं उनकी तबीयत खराब हो जाएगी माशाल्लाह, तो औरत को तो बाहर निकालो। यार गधे के पता नहीं कहां से जानवर छोड़ के आ गए। उनके बच्चों की अभी भी बर्थ जो है सर्टिफिकेट बुखारा से आता है, क्योंकि वो इमाम बुखारी हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं समझते अपने आप को, जैसे सारे दिल्ली के कसाई अपने आप को कुरैश कबीले का समझते। You have to understand when someone who's 10th generation Indian but says he's Sayyid और जैदी और नकवी और खान, तो मुझे बताइए उसमें इंडियन कौन है? हर आदमी इस बात पे बुलंद आवाज से कह रहा है कि हम आए हिंदुस्तान में और इतनी हजार औरतें लूट के ले गए। हर इंडियन मुसलमान की मां कहीं ना कहीं हिंदू थी, बाप का हमें पता नहीं, क्योंकि औरतों की फौज नहीं आई यहाँ कोई। जो हिंदू बच्चियों को उठाते थे, कॉन्क्यूबाइंस रखते थे या बीवियां बना के रखते थे, स्लेव्स रखते थे, उन्हीं की औलाद है ना हम। फिर आसमान से तो नहीं गिरे हैं कि ये सब। नहीं बिल्कुल तारिक साहब, तो ये तो जो इट्स ए क्लियर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसमें ऐसे बयान के बाद भी करमवीर जैसे हमारे दोस्त हैं जो इन सब चीजों में दे स्टिल ट्राई टू सपोर्ट जो इस्लामिक नैरेटिव। इनका जब इसमें सर 9/11 फिर से होगा ना न्यूयॉर्क में करम जी के, तो करम जी जैसे लोग थे जिन्होंने कहा था जहां बिल्डिंगें गिरी थी ना वहां मस्जिदें बना लो, याद है करम जी? मैं तो मोहब्बत का आपने बोला बिलीव इट। नहीं, मैं आई बिलीव इन लव। They wanted a mosque मेरा to जो be built हथियार there. होगा ना सर, मैं भी तैमुरलैन अबे हूँ, तो कर लो मैं ना भी चार बाबर हूँ, शादियां। मैं नहीं, कर लो मैं 4 मोहब्बत शादियां। वाला बाबर हूँ।
शादियां Karamveer करो। is Non ready. violence, नहीं non सर, violence, Karamveer, मेरा non सवाल violence. पूरा नहीं हुआ। नहीं मेरा मैं सर देखो करमवीर जी, जी मेरा जी सवाल तो पूरा हो जाने दो। मैं ये कह रहा था तारिक सर कि जी करमवीर जी वाकई दोस्त हैं मुसलमानों के, कि ये सटल वे में दे आर रियली डिस्ट्रॉइंग द होल कम्युनिटी, स्पेशली वुमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हाँ सटल वे में। ऐसे जो हिंदू हैं या बाकी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम नैरेटिव्स को, इमामों के, in हाँ। subtle way they are really the real enemy of those women. आप इसमें पूरी फेमिनिस्ट वर्ल्ड जो है, जो बुरके के फेवर में जुलूस निकालती हैं आंटियां, उनका क्या काम है? चाहे वो ग्रेटा हो या मलाला हो, किधर की भी हो जाएं, ये पूरा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हो, ये फेमिनिस्ट को बुर्का और हिजाब से जो शौक है, ये कैसे आ गया एकदम से? ये तो लानत बरस रही है ना किसी के ऊपर, कि बोला हम तो वेस्ट के हैं, तो गोरा रंग है, तो हम लोग को तो राइट्स है। अब ये जो जानवर जैसे लोग आ गए, इनकी औरतों का तो इनका अपना फिर होना चाहिए, ये मल्टीकल्चरलिज्म में आ जाता है। तो वी कैन नॉट डिसाइड enlightenment for the native people, tribal, feudal, medieval idiots, कि वो 4 रखते हैं बीवी या 5 रखते हैं। It is so colorful, you know, when a man has 4 wives. It's really charming. अरे भाई ग्रुप फोटो जाके खिंचाओ कहीं। The feminist movement is singularly involved in destroying the rights of Muslim women around the world. क्योंकि फ्री में तो सर माल है अभी सर। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ ना तारिक सर, उसमें एक मुस्लिम महिला जीती हैं, बड़ी खुशी की हाँ बात है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गई, जीत के बाद इंटरव्यू होता है ना मीडिया के साथ, तो उसका वो हस्बैंड उसके साथ खड़ा हो गया, तो उसको सर आंखें भी नहीं दिख रही, पूरा उसको बिल्कुल ऐसे ढकना पड़ा अपने आप मुझे को। पता है, मैंने देखा। जी। तो मतलब वो तो ये तो सर आपको हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो सिस्टम है उसकी भी कमी है। ऐसे पति को तो डाल देना चाहिए जेल में, मतलब कि देखें, एक वो रिप्रेजेंटेटिव। आपको गुप्ता जी मेरी बात सुनिए। शी शोइंग यू हर मिडिल फिंगर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। Pardon my language, but she's saying fuck you. We are here. We came with Khilji and Babar and Muhammad bin Qasim, and we will kill all of you before we go. And you say, oh, that was so colorful. उर्दू में तो हर बात प्यारी लगती है हमको, बस उर्दू में शायरी करते रहे। No, but don't you think that the other side of this, probably that woman is so innocent. She doesn't know any of those She's things that you're talking innocent? about. A woman in Yes, burqa is innocent? absolutely, sir. वो बेचारी दबी हुई है कि अपने The people, the Muslim, that is the single most important factor in poisoning the minds of their sons, is a mother who considers the very existence of women as a sin. These self-hating women who consider the man's right to have 4 wives and what his right hand can possess. I'm quoting exactly from the Quran. Yes. लौंडिया पे लौंडिया रख लो, वो औरतें एंड में जाके बनेंगी क्या? सास। तो उनका जो पावर आएगा वो उसी वक्त आएगा जब उनके बेटे की अरेंज मैरिज में जो बहू आएगी वो उसकी बाजे बजा देंगी। Hence, that is the life of the subcontinental woman. पिसती रहेगी वो। बंदर नायका जो है वो तो नहीं हो सकती प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की अगर उसका हस्बैंड बंदर नायका नहीं होता। या इंदिरा गांधी को देख लीजिए, या बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए, उनके हस्बैंड या बाप के नाम पे ही चल रही है ना उनकी गाड़ी। कोई ये तो नहीं हुआ कि कोई कनीज फातिमा नाम की हमारी जैसे एक लेबर लीडर थी कराची में, शी कुड राइज। नो, you got to have that male stamp of authority printed on you कि ये जो बहल बकरी ऊंट जा रहा है ये फलाने खान साहब का है। आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इतनी मैस फॉलोइंग पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास आंटियों के अंदर क्यों है?
कभी गौर किया आपने? A misogynist like him, जो जादूगर नहीं रखी हुई थी बीवी, जो टूना टाना करके बताती थी कि पॉलिसी क्या करनी है। और अच्छा, जो गोरी के बच्चे थे वो तो पाकिस्तान आ नहीं सकते, चाहे लॉन्ग मार्च करे या फिर लॉन्ग मार्च करे। But the fascination of a handsome viral man who was exuding such handsome as can be. He is from Jalandhar but calls himself Pathan. Everything is solar. हालत तो देखिए ना, कोई आपको मुस्लिम लीडर अब तक मिला है सब कॉन्टिनेंट में पिछले समझे 100 साल लगा लीजिए आप, भगत सिंह से लेके अब तक बताइए कोई मुझे। इक्का दुक्का इधर उधर कोई खाकसार मिल जाता है। No, but you can't you can't paint the entire community because of वो बताओ persona ना लीडर, of some individuals. Sir, एक ए बात कर भाई दो। बताओ ना I मुझे mean, one लीडर। swallow. Yeah, ए भाई sir. करम जी, जी जी टेल मी, जी जी नेम मी वन। जी। गफ्फार खान का तो आपने सुन लिया कि किसी ने कहा कि he was a traitor and you were silent when he said Ghaffar Khan was a traitor. वो तो अरशाद जी के वो अपने Oh, impression sir, उनके। every Indian on this forum kept quiet when an asshole said that Ghaffar Khan was a traitor. एक कम जबान नहीं खुली किसी की। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको चाहिए एमबीए की डिग्री और प्रॉफिट और 13.5% ग्रोथ रेट। बाकी 26-11 को आके बंबई में आपकी ऐसी तैसी कोई करके चला जाए, आप कहते हैं अच्छा कल देखेंगे यार, आज तो जरा पेट ठीक नहीं जा रही यार, कल एक जाके second, sir. मारेंगे। Tariq, sir, just for 1 second, if you could kindly just accommodate Arshad for 1 second. I have a question for him. Well, yeah, go Abdul ahead. Ghaffar was a great personality. Arshad ji, why did you call him a traitor? I'm just curious. देखिए पहले तो इन्होंने मुझे गाली या दी आप है। उन्हीं की बात करें जो ये नहीं, जो नहीं। 1890 के मैं करीबन पैदा आपको बताऊंगा। गफ्फार खान की। पहले तो अच्छा जी, ठीक है, go ahead. पहले तो he called me names। मैं इनको गाली नहीं दूंगा No, वापस। not you, sir. I'm not speaking about you, Arshad ji. ठीक है। I'm speaking about पहले Abdul Ghaffar. वो बात ही नहीं कर सकते नहीं, भाई, मैं वो आपको अपनी बताता बात हूँ। पहले करेंगे। आप बात करने Arshad ji, I don't want you to speak about yourself. Arshad sir, please. ठीक है, Sir, please, respectfully. ठीक है। Um, But he abused Arshad me, sir, you आप know, बात stop करिए it। please. को ट्रेटर कहा। नहीं, आपने मुझे एसोल कहा, लेकिन मैं आपको जो है ना वापस गाली नहीं Asshole सर दूंगा। आप तो हैं आप। अब्दुल अब गफ्फार हम जी को गफ्फार खान की बात was करेंगे। an asshole also, क्योंकि उसने जो है ना मदरसा हाँ, बनाया। Sir Arshad ji, why did you call him a traitor? I'm just curious to know. Because he opened madrasa, he alienated Pashtuns, he did not speak। उसने जो है ना पश्तून को नहीं आगे लेके आया, उसने पश्तून को एलिनेट कर क्या दिया। बात कर रहे हैं साले? आपको And पता that है is मैं why he was पश्तून हूँ, known as आपको पता Frontier है। गांधी। मुझे क्या पता पता है है कि तुम्हें? मैं पश्तून और हूँ। छोड़ो यार, मैं पश्तून हूँ। पश्तून कहाँ से हो? घटिया पेशावर के हिंद को स्पीकिंग तुम हो। You're not a Pashtun. You are a fucking लाज asshole, शट piece और of झूठ shit। मत बोलो तुम। तारिक bloody सर bastard, आप असली you पंजाबी fucking हो सर, bastard। आप असली मैं तो पंजाबी हो जानता सर। हूँ। You are a bastard। We are proud of you sir. You know what? I'm loving it. Okay, tell him. No, but this is bad, guys. Arshad ji, you know, Why, Arshad ji, please. Karamji, what do you want from Arshad? मैं कुछ नहीं, I really wanted to know why did he call Bacha? He'd give you anything. No, You Abdul just have to Ghaffar offer Khan. him a price. He'd सर give it ये to you. समंदर I में don't चवन्नी understand. ढूंढ रहे हैं Why सर। would he call? करमवीर जी, हाँ जी, करमवीर जी समंदर में गोता लगा के चवन्नी ढूंढ रहे हैं सर। नहीं तारिक जी, ये अरशद जी 8 महीने से हमारे स्पेस में आते हैं और एक ही बात हम लोग को बोलते हैं कि तुम हिंदू लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस्लाम। हाँ, तो आप पकड़ दिया ना इनका झूठ। इनका झूठ मैंने इनके हाथ में दे दिया ना। घटिया लोग गफ्फार खान को कहते हैं कि ही इज अ ट्रेटर। These idiots who worked for the British to cut off the limbs of their own homeland, they are calling Ghaffar Khan a traitor. जिन लोगों ने अंग्रेज के गुलामी की, उसकी फौज में भर्ती होके गए कि अंग्रेज साहब बोलो किसको लड़ना है, इधर बोलोगे तो इधर मारेंगे, उधर बोलो तो उधर मारेंगे। Both First World War, Second World War and in Ghadar in 1857, यही हैं सारे पंजाब के मुसलमान जो गए थे। it is so interesting. I just googled Abdul Ghaffar Khan, and it says Wikipedia says his nationality as follows: 1890 to 1947 British Indian, and 1947 to 1988
That's probably when he died. Yes, Yes. Pakistani. And he refused to get buried in Pakistan. 2 से 10 लाख का estimate है उसके नमाज जनाजा में, where his body was taken to Jalalabad. He said, I will not allow my body to be buried in this Pakistan. They kept that old man in prison right up to the 1977 coup when he was released. Uh, And from Quetta airport, he was picked up again and put back into prison. ये आए थे अपनी डिग्रियां लेके क्लेम की जमीनें बनाने. Farhana ji, is your old admirer is here, sir, Tariq sir. I think let's calm down. I think we have Farhana. She's a Canadian teacher and a scholar. A very nice presence on our platform. Well, I mean, good evening, everyone. It looks like a very heated discussion. I'm enjoying listening to you all. Very good points here. Some very nice points, valid points. I agree to some things and I disagree with some things. My personal own belief is that um, I think what's happening with Hindus in Pakistan is horrible. The disintegration of that community is atrocious. What the Muslims are doing to the Hindus in Pakistan, if that was reversed in India, these people in Pakistan would be screaming bloody murder. तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि the Hindus need to take a stand in their country and do exactly what the Pakistanis are doing to the Hindus in Pakistan. They need to get a dose of their own medicine, okay? Because you cannot always play it fair. If somebody wants to play dirty, you got to play dirty. I believe in justice, equality, and fairness. No community should have to live under another community and be subjugated to ridicule, discrimination, disintegration of their society. And I think. but Farhana, if if the Indians are disconcerted and they feel very uncomfortable, or they're very sore about acts of Pakistanis, I think it is counterproductive when you start disparaging the Pakistanis. It's very proper. It's very proper that we all, approach each other with some kind of an openness. Are you serious? No. You want No, I'm not. people, I'm serious just a about second. something else. Karamji, you want Ji. the people who committed genocide in Bangladesh to be treated with respect? Look, Sir, I'm not saying. Sir, Karamveer, we have Professor Kitabi here from Bangladesh. But Farhanaji, thank you very much for opening eyes of Karamveer ji also, because he doesn't want to learn this. Well, I mean, you got to be realistic about things, guys. You can't close your eyes and stick your head in the sand, okay? Because if you're going to stick your head in the sand, you're going to end up dying, okay? If Karamveer ji, take out your head from the sand. All right, guys, listen. Being polite, I did being not polite mean doesn't Karamveer. mean you're weak. I'm not saying Karamveer. I just believe that that people should be treated with courtesy, respect, and decency, no matter where they live. If they're a minority, I mean, I live in Canada. I have just as much rights as the next person. I can walk into any office and demand that my work be done, even as a minority or as an immigrant or as someone, of color. Okay. So the thing is that in those countries, you don't get that equality and justice. Hindus are not treated fairly in Pakistan. Muslims in India are boasting about their position and they want more rights. Guys, you got to face the facts. Karamveer, no disrespect to you, sir. I totally respect you. But this is something that has to be addressed. The elephant in the room must be addressed. You cannot just walk away from this. Thank you. I'll mute myself. Just Professor Kitabi, can I take a quick take from Sandeep about it? Just a quick take. Sandeep, can you, a couple of sentences? No, I'll let Professor Kitabi go, then I can speak later. Okay, all right. Professor has been waiting for a long time. Please let him speak. Go ahead, sir, Professor Kitabi. No, I just wanted to, I was listening to Mr. Arsad, and no disrespect to him, he was telling nothing happening to Sindhis, Beluchis. I just wanted to ask him,
Did nothing happen to Bengalis? They did suicide by themselves, or Chinese came and killed the Bengalis. In fact, you'll be surprised to know that all these days leading up to December 16th, every day is a massacre day for Bengalis. Today is a massacre day for Yes. Khulna. Yeah, today is a massacre day for Khulna, where more than 10,000. Let me be honest. I'm keeping my uh, hand in my heart and telling this thing to you. 10,000 people who were crossing the river, because that time there were dams were not built in most of the rivers, and water is to be, even in December also there was a huge flow of water. Water level was around 11 feet in that river. People were waiting to cross the river, and most of the people who were waiting to cross the river were women, children, because by that time most of the young people, most of the young adults left the villages actually, because Pakistani army was regular. And some this Bihari Rajakar, actually they are the Khabris of Pakistan army. They told 10,000 people are waiting to cross over India. Then Pakistani army came around 10:45 in the morning, and they opened machine gun fire. Okay, believe me, sir, it's 3 hours. They killed almost 9 to 10,000 people. And the most heart-touching thing, we read this part of our history in Bangladesh. A lot of books are published. One gentleman named Ali, he went to search his father actually after in the mid-afternoon, and so Mr. Ali could not find his father. But what he found, he heard little girl is crying. Actually, he went and saw the girl, and the girl was suckling her dead mother. Can you believe it? Initially, he thought a girl was that little girl was hit by bullet, but later on he found that it's not her blood; it's her mother's blood actually. And she was 2 years old. She could not figure out her mother is dead or alive. She was out of hunger. She started suckling her mother. And Mr. Ali, what he did This was, is fucking heartbreaking, man. yes, yes. Listen, the next part. Mr. Ali, the only thing Mr. Ali could find out, her mother had a sindur. Okay, and she figured out she must be a Hindu girl, and she named her as Sundari, means beautiful. And this girl got married in late 90s, actually. And a lot of people, a lot of my friends, I could not unfortunately go back. I wanted to attend that marriage. Everybody from the village attended her marriage, actually. And sometimes I believe humanity does exist. And another day, tomorrow is the another day where almost 400 women were 400 Hindus, majority of them, they were lined up in a village school. And one person, actually, one teacher, Mr. Sarkar, he jumped from the, actually, who they lined up, they know they are going to be killed. And one Sarkar, his name is, teacher's name was Sarkar, actually. He was a little late to join that meeting. Actually, meeting was called in disguise that we want to discuss, you want to give a ID card so that you will not be troubled by army. So instead of that, they lined up 400 people. Majority were Hindus, some were Bangladeshi Muslims who were. They were killed, and all the dead bodies were thrown to a well, village well. And Bangladesh being a poor country, nobody cared who died. People thought those people must have migrated to India as a refugee. Nobody cared. In 1998, when they're like digging up that same well, in they found 328 human heads, individual heads actually. So many other heads are human skeletons actually. And imagine how many more could have just lost in the river actually. Those parts of Bangladesh floods very often actually. So this is a tragedy. And my friend Arsad over here, he tells nothing happened actually. So I, being a genocide survivor, I very well understand the problem of people actually. Mm. My mama, sir, my own mama, mother's younger brother, he was a revolutionary, you can say, writer actually. He used to Bengalis, most of the Bengalis are uh, they write actually. He was a poet, he as teacher as well. He used to write these songs and put in the school notice board. One night, that was early October. One night, he was kidnapped from school. He was kidnapped in front of a student, and he was teaching class 5 students. Actually, just imagine, hardly 9, 10 years old kids. Okay, he was kidnapped in front of his class, and he was taken to a school ground.
where you must have seen typically in subcontinent in the school ground they have a pole where the hoist national flag. He was hung upside down for 4 hours. Blood started coming up, and Bengal is being pretty humid also in October. And I think he died around after 3-4 hours. So once he died, they made sure that he really died. So they shot him 4-5 times. They cut his ears, they cut his nose, and next day they gave his body back to his. That means my grandparents actually. So this is a tragedy actually. In fact, we lived through to tell the story, and unfortunately, none of the Pakistani generals got punished, and they all went unpunished. Finally, we could punish some of these Rajakars. One or two I believe, got hanged, Yes. and 2018, and most of the who orchestrated this genocide are still alive actually. And Yes. my friend Arsad here wants to say nothing is happening. I believe same when I hear Beluchis. I believe the same thing is happening. You heard couple of Yes. months back, 500 dead bodies on a Yeah. rooftop of a hospital, and I showed those photographs to my Beluchi students. I have some refugee Beluchi student in my university. They study in the adult department. Like they as a refugee, they cannot get admission in class 10 or something because they are already 19, 20, 21. So they go to adult school in my university. So I showed them those photographs, and they themselves showed me. They told these are tribal people, Baluchistan and Khyber Pakhtunkhwa people. That's the dress they wear. And some of the photographs they showed me, the rat is eating the dead body, cats are eating the dead body, crow is eating the dead body. Then I realized what kind of Muslims are Pakistanis. Right? Being a Muslim, if I don't have a respect for a dead, what kind of Muslims I have? In the worst cases, actually, people used to fight. Yes, people used to fight. People buried the dead. At least they put sand on the dead body. Right? That's what humanity tells. Right? How the hell you can put dead body outside to make the crows come and eat, rats come and eat, cats come and eat. A fellow Yeah, but Muslims. that's painful. Let's, guys, I mean, this is Karamji, heartbreaking. Ji. let me add one thing over here. Yes, sir. On the 14th of December, which is about the anniversary is about to come, just few days before the surrender of the entire Pakistan army, 400 plus professors, writers, intellectuals, any Bangladeshi Bengali who was an academic of any sorts, they were collected at one place and they were killed in a massive fire from all sides in a massive communal grave and covered up by bulldozers. That And is did you do you do, just a sorry, Dave. Is there any book on these very yeah, grim? plenty. But India will not read it because in India they only read books that can make money. Shame on India for letting go of No, every. probably it's because the Bengalis are dark-skinned people. Yeah. Karamji, Sune, please. Yeah. You traded away every war criminal because they were Punjabis who spoke with Punjabi to the other Indian officers. Your entire army had no one speaking Bangla speaking officers. And when the Mukti Bahini leaders said we want these men to be tried for war crimes, the Indians just said, "Oh ji ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਓ," and it finished. These 400 academics by name, I have a listing of them, and every patriotic Do Bangladeshi you know has this. what were General Jacobs' impressions about it? Whether he wanted to leave them or try them? Yeah, General Jacobs was an outsider, sir. No, but he was an Indian Army general. No, he's Yes, Indian. but he was a Yehudi. Doesn't matter, sir. He was the one. He's the architect. He may be architect or he may be whatever. The issue was that it only worked because Punjabi officers on the Indian army were chatting as if this was a picnic with the Pakistani Punjabi officers. Do you know that on the second day after surrender, they all sat down and watched that movie, कौन सी है वो तारा जिसमें मुगलई डांस कर रही है लखनऊ के अंदर? What was that movie? This arranged for movies to be watched by the Pakistani POWs.
They allowed Pakistani soldiers to have sidearms so that if the Mukti Bahini attacked them, the Pakistanis could defend themselves. Yeah, Tarek sir, don't you think this is a political decision rather than the military taking decisions? No, it No, was a there was no political. The government in exile, Mr. Tajuddin, was outside the loop. He was in London at that time. And Sheikh Mujib was in Pakistan arrested. Tufail Ahmed was under bars. Not a single Awami League politician was alive or around. The entire leadership of the Mukti Bahini was comprising of people of my age group in the 20s or 25-year-olds. So many of my colleagues died as Mukti Bahini fighters. हमने साथ दिया सर उनका तो Tarek we ji, Sir, I want to come in here. Tarek ji, like we have people like Karam here, and we I mean he's a very good friend, very intelligent, but he sees light in humanity that there are some. ना वो So I because think when we see people like Arshad and people, these are educated people and they are blatantly telling lies. So yeah, that's where our hope dashes down. That there is no hope actually in that tunnel. Yes, Tarek that ji. is I would agree, and I think all due apologies to Karambir, he creates a mess for a lot of us by making us look like fools, because when we are telling the truth, there are people like Arshad over here who come with blatant lies, and they're allowed that space to tell that the Muslims who speak the truth are the real culprits. Those who consider themselves Hindustani, those who consider themselves essentially Indian, are the problem. Those who consider themselves Arabs. No, but sir, बात अब ऐसी है कि that we are much more evolved, अरे sensitive, and नहीं, we are civilized not people. evolved. क्या बात Sir, कर रहे हैं? मैं You अगर think आप weapons, even I can एक bear second, weapons, but my weapons will be weapons Karamji, of 1 love, second. weapon of love. 26, Yes. 26/11 कब हुआ था? या अभी How हुआ many था years ago? very recently, just हाँ, तो now. फिर क्या एवोल्यूशन रुक गया था क्या? आपके शहर में घुस के आपकी बजा दी और आपने कहा यार देखो डिकार मत मारो, पब्लिक के अंदर लोग कहेंगे बदतमीज आदमी है। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया भाई? आपका दम निकल जाता है बस पैसे के चक्कर में। I think the Indian population, generally speaking, and this is my perspective, personal opinion, my interactions with Indian people, whether in India or in Canada or USA, the Indian community is um, very much, what's the word I want to use? They're very Neutered. no, they're very kind people. They're gentle. They don't look for fights. They try to resolve things. In Canada and USA and in the UK, they are in very good positions. They're economically wealthy. Please do not Farhana, interrupt me. what difference does it make if you are may I please, supporting, Tarek, if may I, Khalistan is based in Canada? may I What? please finish? Please allow me to Okay, complete my thought. Now, please the go ahead. yeah, they're nice people. They're gentle. They're caring. They're in the top positions in the USA, Canada, and the UK. They assimilate. They don't just come here and associate. They assimilate. They become a part of the fabric of these countries. They get to know the people that they're working with. Whereas us Pakistanis, we come here and we only associate. We are on our goddamn masala, bending up and down 5 times a day. They're not doing that. What they're doing is they're meeting people, they're socializing with people, they're trying to make these countries better. And they're contributing to the tax bracket here way more than we are. And so I have a lot of high respect for them. And I think they're great people. A lot of my friends are Hindu. And I think it's a great community. And they're peaceful people. They're not as belligerent as us Pakistanis. I think they're more peaceful people. And peace is the thing that will bring people together in the end. And but So, right now, so how is the Khalistani movement doing in Canada then, and UK? well, I'm sorry, I'm not very educated about that movement. Oh, I know a little bit about it. I know that the funding is happening. The Pakistanis are helping the Khalistanis and the Sikh community.
Okay, Yes. they are also supporting the Sikh community when they go to the Guru Nanak place in Pakistan, right? They're given protection. They're escorted with military vehicles, right? So they are protected. They are supporting the Khalistani movement because they want to divide India. Okay, they want to divide India. If you ask the Sikh community, hey, do you want to come and join Pakistan? They will say, heck no, we don't want to go join Pakistan. We're better off staying in India. But Pakistan wants to create a ruffle and a disgruntled neighborhood where they want to cause problem. And I think all of us here can agree that the reason Pakistanis do this is because they're not working on their goddamn GDP like India is. They're not working on their literacy rate. India has a literacy rate of 70%, Pakistan 50%. They don't focus on the right things. Indians do. That's all I have to say on this. लेकिन डॉक्टर तारिक सर, जब आप कहते हैं इंडियन, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से इट्स मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। देखिए सर, जो करमवीर जी जो कहते हैं ना, ये एक ऐसी एडुकेटेड हाई क्लास रिच फैमिली से कुछ लोग जो ऊपर उठ गए 75 सालों में, वो हुआ क्या सर कि ये लोग इंग्लिश स्पीकिंग थे, अच्छी फैमिली से आते थे, they didn't had any good reality what is happening in the ground, and because they were coming from rich family, they could get education in English schools, they could easily grab some of the potential influential positions, and they started making the policies. तो सर, जो लोग जो थॉटफुल थे, जो जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, they were in the speaking, they couldn't get to the positions where they could make the critical decision, right? तो ये जो एक discrepancy रही ना सर, that has also hurt a lot, and you can see now in last 15-20 years now, even including the bureaucrats like our Jaishankar ji, they have been given the right positions because they deserve it, even though they are not coming from those high class English speaking things, but they made their kind of niche in the society, and they have been given those critical positions, and they are impacting now foreign policy, be their other critical decisions. तो थोड़ा सा सर, जब आप कहते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं है, I think when you say that, you are talking about those English speaking rich families who have prospered in last 65 years during No, Congress government. I agree with you. मेरे कहने का मकसद है कि ये नॉर्थ अमेरिका में भी जो बड़े लोग खुश हैं कि सब इतने इंडियन सीईओज हैं, इनमें से एक ऐसा नहीं है कि जो खड़े होके किसी काम की बात पे स्टैंड दे सके G20 पे, या जो इंडियन पर्सपेक्टिव हो ऑन द इंडो चाइना इशू, या किसी anything that is addressed by public life or that affects public policy, which means that affects the Congress. Ro You see, Khanna ko dekhiye. Ro the Khanna ko problem. dekhiye. He's a member of the Congress, and he was sitting as the Pakistani head of the Pakistani caucus. Yeah, but Tarek sir, एक चीज Yeah, he was forced to leave that caucus, Tarek sir. I understand, but वो तो 2 साल रहा ना. तारिक सर, only 2 lines I want to add here. देखिए, जो खालिस्तान का मुद्दा जो आपने उठाया ना सर, देखिए जब पिछले बार भी जब 80s में हुआ था इशू, जब पंजाब के अंदर कोई chaos क्रिएट होता है या वैक्यूम क्रिएट होता है ना पॉलिटिकल, तो वहां पे दे ट्राई टू इंटरफियर फ्रॉम आउटसाइड, राइट? आज की जो स्थिति है ना सर, 2 लाइन केवल, देखिए आज की जो स्थिति है, आज पंजाब में एक chaos है, थोड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, यूथ इज लिटिल बिट मिसगाइडेड, वहां पे ड्रग्स वगैरह के भी इशू चल रहे हैं। अभी क्या है सर, जो खालिस्तान का इशू कनाडा में हो रहा है ना, उसको जो मीडिया है ना सर, they try to link that all what is happening in the Punjab is related to Khalistan, but that is not the truth. So the truth is जो पंजाब में जो खालिस्तान के जो ये दुनिया भर के जो 200 लोग बैठ कर के धरना दे रहे हैं, they are just 200 people sir, उनका कोई कनेक्शन नहीं है जो what is happening in the Punjab. Okay. So, and I just have to go for a little while, but I agree completely with you, Gupta Sahab. My point is that
not identifying the problem that India faces from within, not just India. My column today talks about how people are against the Christmas tree sitting here, जबकि बकरा ज़िबा करने के लिए तैयार हैं वो. तो आप this is too complex. I just have to step out because somebody is at the door. एग्री करता हूँ सर, उस जी, बात जी. से मैं एग्री करता हूँ आपकी, टोटली एग्री दैट उन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा. हाँ, हाँ. बट मैं सिर्फ आई वाज हाईलाइटिंग ये जो पंजाब खालिस्तान का है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक मीडिया बार का रोल है, डॉक्टर बट आपकी बात एक सही बार है. डॉक्टर अहमद का छोटा सा सवाल Once करो. Tariq have returned, if I may be kindly allowed to intervene once Tariq sir is back. Okay, Dr. Ahmed raised his hand. Maybe Tariq, you can take a short question if it is allowed. Tariq Fatah. Yeah, Dr. Ahmed. thank you very much. So, Tariq sir, I want to ask 2 or 3 things. One or two things I want to clarify regarding the Farhan issue. He was a great freedom fighter, truly speaking. And one thing is this, but after the partition, he made wish to alliance with Pakistan, and that was a Who bitter was truth a great freedom fighter? I missed that point. Who are you talking because about? that because definitely from the 1910 to 1900. ये खान But साहब की बात who कर रहे हैं, are you खान साहब talking की. about? Ghaffar Khan, I'm जी, जी, talking जी, about. Ghaffar Khan. Okay. Yeah, yeah. So he pledged to join Pakistan, and simultaneously he requested that he want a separate entity, and the government of Pakistan doesn't allow. Yeah. But when the real time is before the partition, and that was he was saying. I was reading the biography. He was saying that was a mistake which I did. The point is this: what was the role at the time at that time when he requested to join back or ask Indian help? What was the Indian government reaction at that time? Because definitely Pakistan government doesn't want to lose that area. So No, he was here's the looking point. I'll Indian address leaders. it. You asked a question. I'll give you the answer in Ghaffar Khan's own words. He told Mr. Nehru, आपने हमको गीदड़ों के हवाले कर दिया. Does anyone recall those words? Yeah, I recall. I know. Yes. It was written in the but that was he was saying that was my mistake from the get go to join What before mistake? partition. He never said he made a mistake. क्यों वो कहाँ से बता रहे हैं आप? No. He said in his own word that I did a mistake to join Pakistan when real time is to join anything else. He क्या was मतलब? Who because he joined was Pakistan? क्या बात कर रहे हैं आप? Who Ghaffar joined Khan. Pakistan? When did he Ghaffar join Khan. Pakistan? क्या Because कहाँ that से was पढ़ के आते हैं आप लोग? because Who told after you that he partition joined Pakistan? I was reading from the book. If you want, I can read the book. Which book, After Bhaiya? He was not. He had no power to join Pakistan. Pakistan, the NWFP में, the British conducted a referendum in which the Ghaffar Khan's Khudai Khidmatgars boycotted that referendum. यार कैसे बातें क्या पढ़ाया जाता है आपको इंडिया में? नहीं, I think that's a misguiding here because क्या he asked मतलब है? for the help. You think there No. was no referendum in Why referendum? NWFP? Why needed referendum? I think we have to go Who back to did the the history because referendum? Who did the referendum? Who did the referendum? You can answer this, but I think what I am It reading, was I'm done by reading the directly from British. I'm reading from the book, directly from the book. Which book? Bacha Khan written his own Abiti. He's saying no. It's He English. never I wrote won't an write it. Abiti. Bacha Why are Khan you guys? Bacha Khan pledged allegiance to Pakistan and demanded an autonomous Pashtunistan. Yes, here's the point. That's You are bullshitting because there's no such biography of Ghaffar Khan. So he never wrote a biography of himself. It's written there when the same leaders. Oh, which Sir, book we you have talking never about? heard. Tariq sir is correct. go We back. have never heard that. यार कैसी झूठी बातें करके Doctor, करमवार कहाँ मुझे फंसा देते हैं आप लोग? Dr. Ahmad, but I can clarify you. I studied also BHU in India, 2 years part of my research. Bacha Khan has not written. He's from Pakistan, sir. Okay, so he has not written any book
any biography of his own. Yes. What you might have saying, somebody else, which Somebody wrote, existed. yeah. He has Oh. not written anything. He has What not are you written talking anything. about? The Pashtun leader who wrote it. Yeah, they are still in the. अच्छा मैं एक जगह बोल दूं आप लोग को, प्लीज एक के ऊपर ना बोला करें आप लोग, है ना, रेज हैंड कर लें, एक बंदा बोले उसके बाद फिर म्यूट कर दे माइक, और फिर उसके बाद दूसरे भी लोग हैं Okay, काफी देर से हाथ I'll just रहे हैं. take your leave. I wish you good night and keep building up Pakistan till you have another 26/11, and that day you will just wake up one day. Good luck to all of you. Take care. Bye. थैंक यू तारिक जी, थैंक यू सो अरे मच फॉर योर नहीं टाइम. सर, 4 साल के अंदर इसको तोड़ देंगे सर, 4 हिस्सों में सर, आप बस जुड़े रहें। अच्छा जी, करमवीर जी आप बात कीजिए. अच्छा, अरशद साहब नीचे बैठे हैं, उनको एमनेस्टी दे देंगे, उनके साथ भाई कोई ऐसा है कि आप लोग you just don't understand where I'm coming from. Being polite is not being weak. You have to understand this. No, A Tarek is rancorous, just showing a rancorous, showing the a truth. rancorous attitude, being full of bile. It's not a sign of strength. Yeah, sometimes No one truth is ever told you to unpalatable, be weak. Karamveer. No one ever told you to keep your guards low. Just say. Sorry. Truth Yeah, is Farhana, sometimes Farhana, you're saying something. unpalatable. Sorry, Karamveer, didn't mean to interrupt Yeah. you, but I just wanted to say कि तारिक फतेह जी ने ये कहा था कि these Indians aren't speaking up at the G10 and this summit and that summit and that summit. The way that politics works in the West is that people come into power, they're a figurehead. What's even more stronger is the bureaucracy. The bureaucracy stays. Politicians come, politicians go, politicians are fed the lines through the bureaucracy. The Western political system is designed that the bureaucrats are actually the ones that are making the policy, formulating the policy 50 years to 100 years ahead. You think America is just running on these engines with new leaders coming in and going, and Britain and Canada too? No. The Five Eyes collectively share information, and these nations will always stay on top for a very long time. And the thing is that right now, China is in a squeeze, and the next country that is going to develop and grow is India, because Indian business and Indian people are trustworthy. They're more trusted than Pakistan when it comes to business and when it comes to having an agreement and honoring that agreement. And I think what Indians are doing is great, but on their own home front, on their domestic front, they do need to keep their guard up. They do need to make sure that Islam doesn't become a vice and a thorn in their side. So I just wanted to say that about the bureaucracy and how the Indians are infiltrating. They're getting really, really good jobs here in the bureaucracy sector of USA and also in Europe and Canada too. They're very highly skilled people. Yeah, Farhanaji, but there is one difference though. Indians or Hindus don't have the concept of Ummah. If they're getting into bureaucracy, they'll work for the betterment of Canada. But if a Muslim or Pakistani gets into bureaucracy, they'll work for the betterment of their Ummah. That's the difference. I don't think we Indians have that kind of mindset. That's, in a way, is a drawback for India, because even though we are at the high places, we always work for the dharma. What's the good thing? What's the right thing to do, right? If you are a bureaucrat of Canada, you should work for the betterment of bureaucrat. That's what Hindus do when they get into bureaucracy. I But agree with the you. I Muslims agree are with the you other way around. 100%. But 100% like agree. Karamveer is saying that being soft doesn't mean being weak. Isn't it what every weak person says? Means how we can say that Karamveer what he's saying is any different, or he's not doing what others I'll have give done? you a very proper analogy, okay? Think about it for a second. Let's say there's a competition between Dara Singh and Gama Pehlwan. All right. And if they're given 6 months to prepare for the sparring, okay? And do you think Gama Pehlwan or Dara Singh will be abusing, calling each other names, or wasting time in rancorous, bilious speech? Sir, I mean, sir, what do you Karamveer think ji, they'll be doing?
Karamir, are you preparing for a fight? Are you saying that you're preparing for a fight? No. Do you know what they will be doing? They'll be very respectful of the silence. Wait a minute. They'll be very We got respectful of your the question, silence. sir. We They'll got be your question. working very hard in preparing themselves. Yeah. When is the fight, though? Have you seen any boxing contest? Calling someone that boxes No. is Have you crap. seen No. any boxing contest? You know, when they I've seen. when they used to do press conference, right? They used to do handshake. Even there, psychologically, they used to dominate and create the fear. That's Yeah, called but do you know psychological the war. most fierce fighter? That's Do you know called what he did? psychological war, Karamveer. Gee, do you know the posturing? Do you know who was one of the most powerful fighter? लेकिन जब वो जीत जाता है ना सर, then we try to be merciful, then we try to say pity on them, then we try to treat them nicely. But when we are going for fight, we screw up them from power and mentally also. Sir, you are not getting that part of it. That's what I'm saying. Karamdir, why do you Mike think Tyson, Karamdir, Mike Tyson, you know, I mean, the way he entered the ring, I mean, it's worth saying. The No, way he Karamir, he also used to trash talk the opponent before the it's match. worth saying. No, but that was one that was just one deviance. Forget it. He used to No, look yeah. eye to eye. I'm just saying. Listen, if this is what you're gonna do, then women will be the biggest fighters. They're gossipy, rancorous, Oh my God! character Don't be assassination. mean to women, I mean, sir. Don't do that. in the sense, Don't people say want that. to. Don't No, say no, that women are not power. That's so sad. no. They're powerful. I'm saying something else here. No, sir. Just That being was so gossipy. misogynist Yeah, comment, let's sir. go Please to take people. it That back, is sir. misogynistic, man. All right. Okay. I think I was saying something else. You cut me Karamdir, short. But let's anyway. go to people who have raised hand. I mean, otherwise it would be difficult. Yeah. Go Yeah, ahead. Go ahead, guys. Go ahead, guys. Yes, yeah, please go ahead. No, sir. Allow Farhana ji to comment on that comment, sir. Karamveer, you should take that comment back. No, we That was need very more bad. Farhanas I in think Gupta ji India. should go down Farhana now. ji, This is time to Farhana leave. ji, Yeah. maybe you should Sir, don't train. misuse your power. If you can say, I will not come to your space even. No, Gupta ji, we need one final good comment for feedback. You know, we need more Farhanas in Yeah, India. that's why I said Farhana should comment on that. Yeah. Well, my take is everybody makes a mistake. And Karamveer, I think you might have just made You yours. didn't wait for me to complete. You didn't wait for me to come in. But Gupta ji is one of the small little. He brings this small little tweaky stuff. A clever manipulator. But that's not manly, Gupta ji. That's not man enough. See, Be दिल like a देखो man. फरहाना जी A का दिल man, देखो a आपको man. माफ He कर wants दिया to करमवीर जी inflame the man. आपको माफ कर दिया इसको कहते हैं बड़ा दिल No. फरहाना जी Forget love it. you, I was saying something salute else. you. You didn't let me complete. Let's move on, guys. I mean, let's. Yeah, I think let's move. But why do you think Karamdir Tariq Fatah could not agree with you? He said if we continue acting doing like that, we'll get another 9/11. Because this reminds me of Swan Singh in 7th century AD when he came to India. The way he describes an Indian character, it makes me very painful. I'm very pained. Character assassination, gossips, and wasting times, taking to sing songs very fast. We would not want that. We really don't want that. We want silent movers, powerful men. We don't need people like that, gossipy assassinators. We don't need that. No, but It's what time to Tariq move Fatah on. said was Karamveer factual, ji, A though. silent, do you strong man think? we need. No, No, Tariq Fatah is do you very think factual. that do we have No, any more you Kshatriyas see, left? Tariq Fateh is bitter about certain things. He is a bitter. No, he's He's a got a scholar. political He's a leaning. historian. He's Yes, a scholar. studied He's the a historian. history. He feels very strong about certain things. He's Yeah, not he's lived he's the a historian. history. Yeah. Yeah, he's lived the No. history. Karamveer ji, what Tarek Fatah ji is saying is that there are no more real Kshatriyas who used to be there. What you're talking about, the powerful I men. think that No, he did the not say difference that. is Come Tariq on, Fateh. See don't put the words in his difference. mouth. The following is the difference. As far as an ideological source of strength is concerned, Hindus lack no books and scriptures. Bhagavad Gita is a very powerful repository of power. So it's how you form your character. The Muslims form their character scouring through Quranic books, Quranic injunctions. They've internalized powerful parables from Quran. For example, let's look at the Libya guy
What was his name? The Libya character, old man Muammar teacher. Gaddafi. Muammar Gaddafi. Muhammad Gaddafi. Yeah. No, not the old man who was a school teacher, and the Italian monopoly over there, their country was taken over, and he fought. He was a retired, about to retire, old teacher. He said he had Quran in one hand and he's right horse. He had some followers with him, and he tried to set his country free from Mussolini. I forgot his name. He's the one There's a who said movie. Quran in one hand, a computer in the other hand. No, horse, gun. And he was a very powerful man, very pious, and a religious man. Never attacked, never killed an innocent man. He used to say, Nasty Sandeep. raise the sky and set the balance. I think Anthony Quinn acted that. What's the name of the guy? Very famous. Guys, you can help me, man. Hey, Priya, Arshia Let's is there go in in a turn. listener. Hypo, So you hypo. wanna call them? Did anybody talk to me? Guys, I was talking about Omar Mokhtar. I think that's the character I was talking about. You've seen that movie, haven't you? Omar Generally, I al was telling Mokhtar. like Yes, Arshia we What have what seen. what in the is the listener. lesson from I that think there's so story, many Karan? people with the speakers. Yeah, I You think just guys need to keep quiet. Karambir, let's go in turn. I think let's go to Dr. Ahmed who has raised his hand. Yeah, Dr. Ahmed. So the question which I think Tariq Fateh basically is definitely a historian, but simultaneously he has some internal issues with Pakistan specifically, which most of the Indian doesn't have. I would say the Yeah, but who level doesn't of have issues with Pakistan, man? Everybody has issues with Pakistan. Come on, that's not no. abnormal. But I'm talking about because he flew from there. He Even got asylum from. Afghanistanis have issue with Pakistan. Yeah, Yes, I was just going there to is. say That's that. quite नहीं मुझे normal, my कोई इशू friend. नहीं है अपने मुल्क Give के साथ guys. I think I think you are not allowing me to complete. Arshaji wants So to come you up and speak, if I'm not mistaken. नहीं Yeah, मुझे let's तो कोई listen इशू to नहीं है अपने Arshad. मुल्क के साथ यार मुझे Arshaji तो कोई wants to इशू come and नहीं speak. हाँ मुझे तो कोई इशू नहीं है अपने मुल्क के साथ आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि आई हैव इश्यूज विद Yeah, पाकिस्तान Arshad, you have an issue Yes. with Bacha Khan for opening madrasas, but you don't have an issue with a guy who divided the country on the basis of religion. How do you explain that? No, I have issue with Mr. Jinnah. मैं उनको तो नहीं सपोर्ट करता हूँ But लेकिन you गफार don't have खान an का issue तो with a country that was created on the basis of a genocidal ideology called two-nation theory. How do you explain it? ठीक है टू नेशन थ्योरी का मैं नहीं सपोर्टर नहीं क्या होना ठीक है चाहिए था उसमें? I पार्टीशन mean, it says that Muslims and non-Muslims cannot stay together. It's a genocidal, racist ideology. What is ठीक ठीक है about that? This is ठीक है ये everything is wrong with मैं that. इसको नहीं No, it's सपोर्ट not करता ठीक. हूँ मैं उसको नहीं सपोर्ट करता हूँ I don't support it. I don't Then endorse you it. don't support Pakistan then. It has happened. So many bad things has happened in the history. So how But do you who correct is saying it? No, how Pakistan do is a you bad correct thing? it now, See, Arshad? the bottom line is the following: by being inimical towards Pakistan, you will not be victorious over Pakistan. You want to take over Pakistan? Do me a favor: develop science, technology, be a prosperous nation. Be Karamveer an ji, envy. That's जब भी Be an आप happening. envy. physics, Okay. no, You सुनो, should be able to walk and this chew gum at the same pointing. time. By No, being no. You're rancorous. talking about science, technology. You open the Yeah. physics book of Pakistan. What do they start with? The physics Doesn't textbook. matter. Why don't you Why? focus Why on it doesn't yourself? matter? Why do you have to You disparage influence everything. Pakistan? No, Karamveer ji, you Ji. influence everything in the name of Islam, Allah. Then did Allah study any physics? But All nothing right. has been I don't know said. where you're going with this. Okay. I don't know why Allah has anything to do with this. Then We're why? talking about. Then why the Remember science something. I and want to math talk book about. has? Wait, Why sir. the science and math One book thing is should very clear. begin with? Are. Should begin. Okay. Human life, human life, habitation, culture, nuance is human artifact. Don't talk about God and all. Science and technology is human efforts. All right. Do your best and leave it to the Almighty, whatever it is. Allah, where it goes to Narayan, it goes to anywhere. You See, talk about in India, show me if one Indian book, show me one Indian textbook like so-called science and math has anywhere mentioned anything to do with Hindu mythology or Hindu
Sanatan Dharma. I Nothing. don't know what you're saying. But that is why India is ahead of Pakistan, because your curriculum is very secular. Karamveer is biased. Farhanaji, Karamveer is biased there. He cannot accept. See, he cannot even digest that. When we No, no. showcase the reality, he's anti-Hindu. No, I agree with Karambir. He said we will win by developing science and He technology. was a great Hindu. He was a And great this Hindu. I is removed him. and this is what you need to keep doing, and India is doing He's that. he's a pro Hindu. What has he done for Hindustan? I want to bring him up actually. I want to see what he did for Hindustan. Let's see what he did for Hindustan. Let's talk about it. Let's spar about it. I want to challenge anyone who says he's done more than me for Hindustan. Actually, Karamveer, can I that's say actually a something? better way to deal with this. Karamveer, can I say something? No gossips. The concrete one. No I want to gossip. see Let me tell you the truth. Let me tell you the story. You know, जब Where is सीजर this? ने एलेक्सिया को जो है सीज किया था, तो उसमें 1.5 साल तक उसमें लॉकडाउन उसको सीज किया था, ठीक है? तो अभी के टाइम बदल गया। देखिए सब, इंडिया आज वही कर रहा है। आप लोग कहते हो गन उठाओ, दौड़ करके लाहौर में चढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता। पहले उसको चारों तरफ से घेरना पड़ता है, उसकी सप्लाई चेन बंद करनी पड़ती है, उसके लिए तो इंडिया ने वही किया है पिछले 10 सालों में। आज हालात ये हैं, देखिए पहले So हम are लोग you happy emasculating Pakistan and listen to starving me, sir. people of Listen to Pakistan? sir, No, listen वो to me. आपको satisfaction मिलता है सर इससे? आप Nobody मेरी is बात नहीं starving सुनते here, हो, Gupta. करमवीर जी, लाहौर आप को क्या हमारे कर दिया दोस्त आपने? हो यार, आप No, but why do you want to kill the Pakistani? What is the delight No, that we you are get not. by Let me emasculating? explain you, sir. Let me हाँ explain जी, you. सुनो, पूरी बात तो सुन लिया सर। जी आप जी। जब हमारे स्पेस में आप नहीं बोलते हो, हम बोलिए कितना बोलिए आपका साहब। I'm सपोर्ट sorry, I करते will हैं। not. Okay, go ahead. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, we are not killing Pakistani people. Oh shit. We are killing Pakistani ideology. We are getting rid of the common people, innocent people from this army who is strangling there since last 75 years. तो आप ये गलत सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तानी पीपल के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हम वो जो आइडियोलॉजी है ना, आर्मी की जो पकड़ है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो देखिए आप जो आप कहते हो इंडिया अटैक नहीं करता, सर वर्ड है चेंज। अभी आज पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि वो एटॉमिक अपनी न्यूक्लियर पावर को सस्टेन कर सके या मेंटेन कर सके। देयर वुड बी अ टाइम व्हेन दे विल गिव अप that thing to other country, anybody else. तो बात आप समझें, आज उनके पास इतनी Sir, but that's fine, Gupta ji. That's your whatever you're saying about it. If you have, you want to show your power towards Pakistani army, you to go ahead, do it. Hindustan has to be a strong nation. I वही तो कर totally रहे हैं get सर। this. देखिए But wait a जब minute. But I think there has to be distinction that common man must not suffer. I think with the country suffered. For Karamveer, example, when I agree with Pakistan you. नहीं सर, suffered. देखिए एक second. कोलैटरल डैमेज तो एक होता है Karamveer, second, सर। sir. There is I'll just always share some something with you. collateral damage, right? Sir, But the point here is look at today. Today, Pakistan army has become just like a paid army. ये जा करके वहां पे दरबान का काम कर रहे हैं कतर ओलंपिक्स में, फीफा में, राइट? तो आज उनके पास इतनी पैसे की प्रॉब्लम है कि वहां जा करके वो चौकीदार बने बैठे हैं कतर में। तो आप देखिए इंडिया के लोग बाथरूम धोते हैं वहां पे। अरे तो गुप्ता करमवीर साहब जी, आप no, ऐसा Indian मत army करें। doesn't बनाना do that. चाहेंगे क्या? ओ हेलो इंडिया इंडियन। के लोग वहां पे बाथरूम धोते हैं, ओ भाई साहब, मिडिल इंडिया ईस्ट में बाथरूम धोते हैं। माइक खुलेगा अब बहुत। ये जैसे No, अरशद जैसे this रिटायर्ड is आर्मी childish. I mean, ऑफिसर, this is childish. Let's not go there, आज right? अरशद जैसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के पास पैसा नहीं है कि वो अपने को सरवाइव कर सकें। नहीं इनको इंडियंस के अरशद पास जी जाके बैठना देखें, पड़ता है। Can you please stop this nonsense? I think we have to have an open heart and open fucking mind. If anyone has their heart and mind closed, they can leave. We just don't need that. Yeah, Karamveer, I think you are right. We need to separate people from the ideology. People are suffering today in Pakistan. For example, the Pakistani army had nothing to do, for example, with this the floods, and people were blaming the people for any of the shortcomings of the Pakistani army. The Pakistani don't army mix up is inflicting a genocide on Baloch people. No, but I hear you. I hear you. No, but I'm you're talking saying the that common man in Pakistani army Pakistan, has the flood victims. But you know what?
the way. But yeah, I think as a fellow Indian, and they are Muslims, I understand. But you will not like it. But I'm going to say it. They are still an extended family. All right, Are they're Baloch alienated. people I'll keep extended saying that to family, you. Karamveer? The Are Baloch Muslims, okay, extended Well, they family? of course they are. Karamveer, उनका Of course. DNA बदल गया. So उनका DNA बदल only गया. Sir, Punjabis are DNA nahi extended family. badalta. DNA nahi badalta. It's very new. So 1947 is yeah, very new. आप मीरपुर की तस्वीर देख लीजिए आज भी वहां पर you still see those shival and all. It's very new. It brings tears to your eyes. yeah. It's very painful. I know. Karamveer, if you feel 150 Baloch साल are पहले your की extended बात हो family गया. too, you should support independent Balochistan. No. If you It's feel you see, but Bengalis are your I extended think your family, heart should breathe for the people. I 1971 mean, you wherever made it it a is. good thing. You should agree. Breaking up Pakistan was a good thing if you believe Bengalis are also your extended family. Of course, But you of seems to course. believe only Punjabis are your extended family. That's not No, I'm done not. like No, that. I'm not saying that. I'm not saying that. So let's concentrate on Baloch people who are facing genocide. Why don't we talk about that? बलोच, सिंधी, पश्तून सबको सपोर्ट करेंगे हम. Yeah. So those यार are मैं the तो real पश्तून हूँ, मेरे Pakistanis. पे तो Those are कोई people जेनोसाइड too. नहीं हुआ But you यार. see, what is happening is like the country wants to. Yeah. No, Pakistan is not a I normal think you country. need to. Pakistan is not a normal country. Every country has an Well, that's army. Army look has at a the country. look at the impressions that the Pakistanis might have about India. Think about it for a second. Yeah, it's not impressive. Let's look at the facts. Look at who controls everything in Pakistan. Foreign All right. policy, But all what I'm economics. all what Pakistani I'm army controls it. all what I'm saying is, I think the best approach towards the entire situation is having a bigger mind and a bigger heart. That's Yes, all. I have a All bigger what heart. अरे सर, Support जिसका ब्रेन independent ज्यादा बड़ा हो Balochistan. जाता है वो I काम नहीं करता सर. ये साइंटिफिक फैक्ट है सर. बिगर का अच्छा, डेफिनेशन बताओ तारिक पहले. फतेह है क्या स्पेस में? तारिक फतेह जी का नाम लिखा हुआ स्पेस पे है क्या? है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी करमबीर तारिक फतेह है इधर. अरे अर्शिया मलिक I'm है, not. अगर उनको बुलाना चाहो तो नीचे. Arshia ji ko main kai baar I've I told her to come up. I just want to say something. देखो, पाकिस्तान का बजट अगर आपने ब्लो करना है ना इंडिया ने, just fly a few planes over their territory. You'll blow their budget. They'll be sitting there scrambling and spending their money, and you can take your jets back home, park them for a couple of weeks or months, and then do it again. They just barely made the payment. They just barely made their payment this time. People are shocked in Pakistan. They're running on fumes. Look, at the end of the day, no matter what you do, technology, education, get rid of your cult, teach your kids technology, education, try to be forward thinking nation. Otherwise, you're always going to be hating yourself and you're going to be hating your neighbors because you're not Yeah. succeeding. Yeah, why can't you send planes of medicines, education, books, literature, helping people Yeah. in a flood situation? Why do you have to send bombing planes? Why do you have अरे वो to टमाटर नहीं think of लेते those ईरान lines? से No, सर, वो no. टमाटर Well, नहीं लेते. I'm saying that if you really wanna, why can't we bombard Pakistan with affection and hands of friendship? Because they don't Think want about it. it. Why are, can't we are just do you it? are you going to Change get that. any results, Karambir? Are you going to get results? Okay, let's go to Jay. People who have raised and Jay, Rajveer, and then Gupta ji and Sandeep. Yeah, Jay. Jay, can you hear me? Can you hear us? Okay, let's go to Rajveer. Hello. हाँ, I can hear you. एक Okay. second. Go ahead. हाँ. Can you hear me? Yeah. हाँ, मैं सुन रहा था यार, and I've heard Karamveer, and I'm trying to understand where does he come from and where is he going. तो मेरा एक बड़ा, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था और करमवीर भाई अपना जो है जिस तरीके की बातें करते हैं वो कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज ही गोइंग, क्योंकि एक इतना मिक्सअप हो जाता है. और आपको तो पता ही है जी सर, मैं जो है एक ये क्या चक्कर है यार, ये किसने माइक खोल दिया बीच में? One second. हाँ Okay, go ahead. जैसे आप कुछ बोल रहे थे.
बोलिए जनाब, बिस्मिल्लाह करें। आप नहीं हाँ। समझ पाएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, पर बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं तो करमवीर भाई देखिए, जब आप ये कहते हैं कि एज अ सोसाइटी वी हैव नॉट डन एनीथिंग, although I agree कि DNA has an influencing of ideological perspective, वो आउटर वर्ल्ड होता है और उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जीन्स टू जीन्स, सिर्फ एक बोलचाल के एक तरीके से, वो कल्चरल है, बायोलॉजिकल नहीं है, बट है एक। लेकिन जब आप ये सब बातें करते हैं और आप ये दिखाते हैं कि इंडियन सोसाइटी हैज बीन लैकिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। आधे घंटे पहले आपने जब ये बात की तो मैं सुन रहा था। आप एक देखिए, दुनिया की पुरानी जितनी सिविलाइजेशंस को उठा के देखें, हम चाहे मेसोपोटामिया में चले जाएं, चाहे पर्शिया पे चले जाएं, चाइनीज पे चले जाएं या भारतीय सिविलाइजेशन पे चले जाएं, लिविंग कंडीशन में आपको वो डेप्थ किसी सिविलाइजेशन में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चाइनीज में रूलिंग एक पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की है विच इज फॉरेन टू देयर नेशन, और मेसोपोटामिया और ईरानियन पर्शियन सिविलाइजेशन पे दूसरे लोग लाके बैठे हुए हैं, जैसा आपको पता ही है। तो इकलौती सिविलाइजेशन है। तो अगर आप ये जब बात करते हैं तो आपको ये ग्रिट नहीं दिखाई देती कि हजारों साल से ये लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में भी इन लोगों ने काम किया है, तभी आज तक जीवित हैं। और आज इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पे वो डेप्थ आज भी है, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। मैं बहुत टाइम से आपको सुन रहा हूँ और आप मेरी आवाज पहचान ही गए होगे, बट इसमें आपका लॉजिकल पॉइंट नहीं दिखाई देता मेरे को। इकलौती सिविलाइजेशन है जो स्टैंडिंग है। लैटिन आज के टाइम पे डेड लैंग्वेज है, कोई लिख नहीं सकता लैटिन को। संस्कृत आज भी लिखी जाती है, आज भी वो कल्चरल एथोस जिंदा हैं, मैक्सिको में नहीं रही। लैटिन की वो जो लिखने की परिभाषा थी वो खत्म हो चुकी है। लैटिन बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती, इट्स अ डेड लैंग्वेज। संस्कृत आज भी जिंदा है, वो सिद्धांत आज भी जिंदा है। राम आज भी आदर्श हैं। जब हम बिलियंस ऑफ ईयर्स की गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं, जहां पे आप माइन्यूट से माइन्यूट एक अर्थ है और उस पर रहने वाले आपका पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी ज्यादा माइन्यूट है, उस लेवल की अगर आप बात करते हैं, तो इकलौती जो थॉट प्रोसेस था जो हजारों साल से सिद्धांत पे जीवित है, वो भारतीय है। तो आप ये सब बातें कहाँ से निकाल के लेके आते हैं कि हमारे अंदर वो लड़ने की क्षमता नहीं है? मुझे ये बात समझ ही नहीं आती है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, हमारी लैकलस्टर अप्रोच रही है, हमारी परेशानियां रही हैं, हमारा ये रहा है कि हमारे ऊपर अटैक्स हुए, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट वी हैव सर्वाइव्ड, राइट? देयर इज अ डिस्टर्बेंस फॉर 200 years और 300 of Islamic rule and all that stuff, बट उसके बाद भी जिंदा है ना, उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी सिद्धांतों के साथ, जो आज पूरी दुनिया मानने को लिए तैयार है। ये बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वही रिसर्च चल रही है जो हमारी बातों में लिखी है। आपने एक बहुत अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने 20-25 मिनट पहले गीता को कोट किया। गीता की बात को अगर आप इतना ही मानते हैं तो सच कब बोलेंगे? कर्म के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति जो वीरत्व को प्राप्त कर देता है, उसका नाम कर्मवीर है। कर्मवीर अगर नाम रखा है तो सच कब बोलोगे? हिम्मत है इधर-उधर घूमने के बजाय सीधा सिद्धांत पे सच बोलने की? All right, you're just spoken enough like a BJP No, stalwart. no, no. Okay, we're done with this, Seriously, gentlemen. seriously, Stop it, man. You're a seriously. superpower. We don't need to worry. We're going to take you, okay, tomorrow we'll just walk बस into बस it. वही, All right, बस you're done नहीं enough. सर जी, सर Enough. जी, सर जी, 75 years of your legacy and hard अंग्रेजी work, अंग्रेजी मत centuries बोला of करो ना सर। civilizations. जे आप हिंदी में भी बोलकर आपको जहाज उड़ाकर पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में करके मैं चले बोलना गए आप। शुरू करूंगा, आपको Anyway, समझ नहीं ना आएगी। अंग्रेजी की बात नहीं है, अंग्रेजी की इतनी ताकत होती, आपको अब समझ नहीं इनको आएगी बाकी अंग्रेजी छोड़ जो मैं दोगे आप। बोलूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मत तो सर जी, Anyway, मैं ये कह रहा हूँ ये ना, बीजेपी के वो प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे जान। करमवीर भाई देखो यार, मैं नहीं, रोज तो आप आता नहीं। बीजेपी की बात ना करो, ये बीजेपी का वो नहीं है जी। ओ सर जी, वो मैं कोई XYZ सर को पता ही होगा, बीजेपी का मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है ना? ना वो जैसे हाँ, बीजेपी के वक्ता बोलते हैं ना, हम ये और ये नहीं सभ्यता नहीं नहीं वो नहीं जी सर गई और जी, वेटिकन ओ और सर लैटिन जी, मर गई, ओ संस्कृत जी गई और वो ओ संस्कृति एक भी बढ़िया सर है। जी, यहाँ कोई बीजेपी का हमारी सपोर्टर हमें नहीं पता बैठा है हुआ। कितनी हमारी जो संस्कृति है, मुझे पता है कितनी संस्कृति है, मुझे पता है मेरे भारत में कितनी संस्कृति है, वो मुझे पता है। सर जी, और ये भी मुझे सर पता है जी, कितनी अंग्रेजी यूज 50 होती है मिनट से, ओप्रेस करने सर के जी लिए 50 वहां पर। मिनट से सुन रहा हूँ, तो 2 मिनट मेरी भी सुन लो ना, ऐसी क्या, All इतनी right, क्या you're जल्दी done, है? gentlemen. You didn't.
ये डन, इतनी क्या जल्दी है? ना ना कोई बात नहीं, आप बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। नहीं, ये गुमराहology कर आपकी हर एक बात सुनिए लिंग्विस्टिक, सर जी, तो जवाब तो नहीं देना वो दो। जो आप ये कह रहे हो जो लिंग्विस्टिक वो अगर करके ना, ये ठीक है, मैं मान गया। आपने एक भी सॉलिड चीज नहीं बोली है, ठीक है, एक भी सॉलिड चीजें, मैं आपकी बात सुन सॉलिड रहा था, चीजें मैं सुननी सोचने की है, कोशिश कर रहा हूँ। आपको सॉलिड चीजें मैं सुननी है। आपकी नहीं, मैं आपसे सॉलिड बात ये सुनना चाहता था, सेंस ऑफ जो भी आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बात करी हमारी सिविलाइजेशन सुप्रीम रही है, वी आर द ओनली सिविलाइजेशन। ऐसा क्या यूनिक चीज कर दी आपने आज के समय, आज के भारतीय अस्तित्व पर और आज की भारत की परिभाषा पर? कौन सी सॉलिड चीज हो गई है, ये बताओ। आपके कहने का मतलब ये है वी हैव सर्वाइव्ड द ऑनस्लॉट। Hinduism has not thrived, gentlemen. It has survived. It was maimed and tamed during Islamic time. Today we have the severance of Pakistan. कैसे बना? Hindus पे थे ये लोग। So don't say that thrive करके. We survived. Gentlemen, you're confusing survival with flourishing and pristine of a civilization. I think you're sadly mistaken. थोड़ा है ना, तो cognitive अपनी faculty को थोड़ा सा improve करो। और राजवीर, हाँ जी, thank you Jay. राम We'll राम come back to you, Jay. राम We're राम going to come back to करमवीर you. जी। मतलब हाँ शट जी, ऑफ करने का ये तो तरीका बड़ा अजीब सा नहीं, हुआ। जय शरफ करने के लिए मेरी जान, आ जाओ, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप इस चीज के ऊपर सोचो, फ्लरिशिंग और लिविंग और सर्वाइवल। आप सर्वाइव कर गए एज हिंदू, your pronunciation is एज ए not good. हिंदू आप सर्वाइव कर गए। Your एक सेकंड, pronunciation of English words, it's नहीं, absolutely आप एज ए terrifically हिंदू bad. सर्वाइव कर गए, I'm आप really इसको sorry. फ्लरिशिंग बोल रहे हो। आप इस आपको चीज के ऊपर अंग्रेजी सोचो। भी बोलनी नहीं आती सर। जो मुझे I'm नहीं really आती, sorry. मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं आता। चलो ठीक है, आपके जी अंग्रेजी सुन लो। अब राजवीर जी बात कर लीजिए और उसके बाद रीतू जी बात करेंगी। आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चलो, पसंद नहीं आती बात, सॉरी प्रिया, यू मे सॉरी लीव, यू कैन प्रिया जी, स्टे। सॉरी। या सो राजवीर जी आप बात कर लीजिए, उसके बाद रीतू जी बात करेंगे। किससे कर लूं बात? म्यूट कर, ओह सॉरी, हाँ जी, देखें म्यूट। राम राम जी करमवीर जी। जी सर, मैं मतलब आपकी बात से मैं एग्री डिसएग्री की बात नहीं है, मैं ही सोच रहा था सर। मैं मेरे ना इस मोहल्ले में तो नहीं सर, दो तीन गली छोड़ के एक लड़की रहती थी सर। तो मैं सर प्यार तो कर लूं, लेकिन सामने वाला करने नहीं दे तो मैं कैसे कर लूं? आप बात समझ रहे हैं करमवीर जी? मतलब हेलो, अरे थे सर। ऐसा है, जो दीवाना होता है ना, वो हाँ, अपनी किश्ती को उसके तो लगा के धक्के रखता से है कैसे झंडे। कर लूं बात मैं? सुनो, वो क्या बोलते हैं किश्ती में लगाते हैं जो पानी में चलने के लिए, क्या बोलते हैं इसको? आग सेल नहीं, सेल वो बोट, जी, इसको क्या बोलते हैं इसको, जो वो लगाते हैं? इंजन इंजन। नहीं, हवा में चलने के लिए जो पुराने, क्या बोलते हैं इसको यार? हवा में कश्ती चला रहे हो करम जी, कर क्या रहे हो मेरे है? रात? सेल होती है बोट पर, जो उसको सेल ही बोलते हैं क्या उसको? आई थिंक वो बागवान लगा बागवान बागवान। हाँ जी, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो अच्छा दीवाना होता है ना, वो दिल हाँ को खोल करके वैसी नाविक की तरह होता है जो सेल लगा कर बैठा रहता है। करमवीर जी, मैं बात मान, किस टाइम हवा चलेगी मोहब्बत की कुछ पता नहीं चलता। तो मैं दोस्त ये बातें तो छोड़ दो आप। सर, मैं मेरे दिल में गणाई है प्यार। मैं ऐसा बिल्कुल, है, अगर पत्थर के अंदर देव भावना पैदा कर सकते हैं हम लोग, अगर हमारी सभ्यता उसकी वो है, प्राण प्रतिष्ठा तो होती है सर। नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना। जी, आप अपनी मोहब्बत में भी प्राण प्रतिष्ठा करो जान। मैं तो कर लूं, मैं सर, हाँ, मैं धक्के तो से हो पैसे जाएगी, हो जाएगी। बात वो नहीं सर। मैं दीवानगी करो, मोहब्बत और बढ़ाओ आप। I think you'll be successful. नहीं सर, You're going to मैं be वही, successful. मुझे एक क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, Has Hinduism survived for last 1400 years or thrived for 1400 years? थ्राइव 1000 मोहम्मद बिन कासिम के बाद थ्राइव 1400 साल हो गए, जितने साल हुए हैं। I Yeah, think he it has came in been a 1100. constant struggle against barbarians. I think we need to accept that. Yeah. No, but हाँ, let's बस pay. मतलब I just want to, because the gentleman made a point. यार दूसरों को भी Thrived. बोलने दो करमवीर जी। Who's this man? आपके दोस्त हैं सर, गुप्ता जी। Gupta is an interloper now. Gupta ji, I think you're done with your. नहीं सर, अरे मैं यार करमवीर Gupta जी जी is यार an सुनो interloper. यार, जी वो तो राजवीर, दोस्त अच्छा हैं हाँ यार, जी, करमवीर मेरी जी बात तो। सुनाओ। ना ऐसा करते हैं राजवीर को, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आवाज हम नहीं आ रीतू रही। जी के पास जाएंगे। आता राजवीर, जी कुछ जी। ऐसा के होता है, पास some जाएंगे। people who are not successful in wooing a woman, उनके लिए mail in bride हो जाएगा, ठीक है? We will send you a bride, mail you a bride. Is that okay? हैं? सर, मैं मेरे गालों में गुदगुदी हो जाती है सर ऐसी बात सुन के, आप समझ रहे गुदगुदी तो ये तो मोहब्बत हाँ गुदगुदी ही करता है। हम जी जी सबको मोहब्बत करनी चाहिए, ओके? जी, मैं कर लूं सर, मैं खुल के दिल से कर लूं, लेकिन मेरे को डर लगता है सर, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर मेरा दिल टूट जाएगा। एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं सर, मैं क्या करूं? जब ग्रेविटी एक जड़ चीज के अंदर हाँ मोहब्बत जी, से
चेतना पैदा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा जो कहते हो आप, चेतना पैदा अभी होती है। करणवीर जी आपको पता है कि जिब्राइल की वाइफ आई थी, उसने बताया, वही आई थी कि उसने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब जो है वो विमेन को जो है ना चार चार मर्दों से शादी करने की इजाजत है। वो जिब्राइल की वाइफ ने बताया अभी, तो उल्टा हो In गया है today's हिंदू का days, नहीं। no man has been able to restrain and retain a woman. You're free to do anything you feel like. Yes. All right. तो हम ये तो अच्छी बात है सर, इसमें तो क्या सर दिक्कत है? हमारे Let's- हैंड रेज में आप लोगों को भी बोलने देंगे yes, कि आप let's नहीं move to हमारे हैंड further. रेज Karamveer, say रजवीर that to अरे the अच्छा तारिक Iran जी सुने, मेरी people. थी एवरीबडी प्लीज 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 प्लीज, एक राजवीर जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं रितु जी के पास जाएंगे। अभी कोई भी बोला मैं म्यूट कर दूंगी। कर दीजिए जी, आप महिलाएं, आपके पास हक है तो जी राजवीर जी, जी जी इरशाद। हाँ जी बिल्कुल, मुलाजा फरमाएंगे हम भी। तो क्या कह रहे थे करमी जी? आपने बोला सर पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है सर, बात दिक्कत नीयत से है सर। लड़ाई नीयत की नीयत से होती है करमीर जी, इंसान से क्या दिक्कत है? अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके मन में चोर हो और मैं आपको प्रेम करता रहूं सर, प्रेम और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है सर। आई थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी टू थिंक दैट ओके वी आर फाइटिंग और वी आर विनिंग अ सूडो वॉर। इस कॉन्टिनेंट से लेफ्ट लेफ्ट मारते हैं ना सर, इस सब कॉन्टिनेंट से, तो लोग एक दूसरे के जाके साथ साथ बैठे होते हैं सर, और किसी गोरे के जूते चाट रहे होते हैं। सॉरी टू से बट इट्स एक्सेप्टेबल, करते भी हैं। तो हम जो ये लड़ाई लड़ते हैं एक दूसरे से दिखाने के लिए कि मैं तुझसे बेटर हूँ, आई थिंक ये सूडो हेरोइक फीलिंग है। पर सर प्यार तो मुझे लगता है सर दोनों तरफ से होता है। मैं मेरी तरफ से ये सोच सकता हूँ कि हाँ मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन जब मैं एक पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझ के सोचता हूँ सर, और आपने जब बोला कि मैं इंडियन हूँ, आप कब से इंडियन हुए? वो तब से इंडियन हुए जब से इंडिया डिवाइड हुआ, या तब से इंडिया जब था पुराने टाइम में? क्योंकि तब से था तो वो आपके लिए पाकिस्तानी नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान अलग नेशन नहीं है। हाँ तो फिर तो आपको ये बोलना ही नहीं चाहिए सर कि आप मैं पाकिस्तानी से बात बोलता ही करें, नहीं आप हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में I बात कर रहे keep हैं। calling Pakistan as my extended family. And All right. Bangladesh? As Oh, Tariq Fatah says, there is no Pakistan for him, but he means in a different sense. I mean in a different sense. certainly We sir. talk about the same thing, but it same thing you're दूसरों को saying, भी but we बोलने mean दो very यार differently. करमवीर, Yeah, यार क्या Karamveer, कर रहे let's हो आप? move. चलो Rajveer जी is the 10th. Yeah, जी मैं तो डन सही हूँ जी, मैं तो मेरे क्या गरीब आदमी का कोई नहीं। Let's थैंक यू hear from करूंगा। Nisha. I think Nisha is your neighbor. yes. Is that the woman you're in love with? Yeah, okay. Thank you, Rajveer. Nisha? सॉरी Nisha, you there? Yes, very much. You were saying something, Karamveer. I'm sorry I lost you. थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क इशू है। You didn't miss much. So exactly what are we debating here? So we are talking, Nisha, like, can we reconcile with Islamic dialectics in Indic civilization? No, we cannot. I mean, that is the honest answer. We cannot because And can you convince Karambirji? That's the biggest. no. So actually hear Karamveer ji, and I think what he's saying has got nothing to do with ideology. His heart belongs with the people in Pakistan. See, we so Islam as an ideology is 180-degree opposite of who we are, and we will never, the twain shall never meet. I truly believe in that. I have had a chance of a lot of. So when I lived outside India, for some reason, India and Pakistan are perceived to be one and the same, in a broader sense, in a very broad brush stroke by the Western world. And that is like, that actually irks Pakistanis, but there is nothing they can do about it. A simple example is in so many Pakistani owned restaurants are actually called Indian restaurants, or they will have name like Bombay Masala or something like that. That is one. When students were coming back from Russia, even Pakistanis were holding Indian flag and not a Pakistani flag when they had to, when they had to come out of the Russian borders and Ukraine borders. Little things like that. A simple example being, it's very anecdotal, but I had gone with a Pakistani friend to a hair salon,
And then the hairdresser started to talk, and she said, "Oh, you're from India." I said, "Yes." And also, both of you from India. So the other friend said, "No, no, no, I'm from Pakistan." The hairdresser says, "Oh, it's the same thing. They are one and the same." And just like it just kind of took the winds out of a sail. It is a very unfortunate incident in our history that it happened. There are so many reasons. There are so many arguments. It should not have happened. Two nation theory, this and that. All of this is ideology, and all of this is basically a quest for power. We can argue endlessly ad nauseum that yes, oh, is it right, is it wrong? We don't know that. It's done. It's a reality now. What else is happening in Pakistan is also a reality. How does Pakistan feel as a nation about India is also a reality. And there are so many layers and nuances. But what does not change is the heart of people. And I think Karanveer ji is talking from his heart. Maybe he had extended family in Pakistan. Maybe there are still so people have left this country or that country, and they have migrated or they have shifted from here to there. But trust me, the मिट्टी that we are born, जो मिट्टी से हमारा शरीर बनता है ना, उसका उसका पुल बहुत स्ट्रांग होता है. बॉर्डर्स बन जाते हैं तो देश नहीं बनता. देश बनता है दिलों से. And I know what Karnveer ji is saying. So on a surface rudimentary level, when you bring it into a discussion, you can actually pull it apart, or you can pull it together. You And see, he's also right. yeah, But not at the same time, करणवीर जी, जहाँ राजनीति होती है ना, जो राजाओं की नीति है, वहां पर भारत और पाकिस्तान एक हो ही नहीं सकते. बिकॉज वो दिलों में इतनी एनिमोसिटी है. आपको पता है, जब घरों में बंटवारा होता है ना दोनों भाइयों के बीच में, तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है. 7 पुश्तों में आना जाना और खाना पीना नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि एक जनरेशन में वो बंटवारा हो गया था. तो दिल भी बट जाते हैं कहीं ना कहीं, मगर खून तो वही है और रीति रिवाज सारी चीजें वही हैं. It's a very complex and nuanced situation, and honestly, I've been listening both the sides, and I really don't think anybody is wrong from where they are standing. The only matter is when we get into a discourse like this is A, rise above ourselves, B, actually listen with empathy to what other person is trying to say. कभी कभी शब्दों से ज्यादा बड़ा होता है उसका उसके पीछे के इंटेंट को देखना. तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो हम कभी एक हो ही नहीं सकते. सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज बहुत अलग है. हम ईस्ट की तरफ बैठ के पूजा करते हैं और वो वेस्ट की तरफ, तो मतलब एक बेसिक सी चीज यहाँ पे है, तो कैसे अलग हो सकते हैं? दैट इज वन थिंग. बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक जाली की तार खिंच जाने से दिल नहीं बच जाते. कांटा जरूर फंसा होता है कहीं. And it is like a generational trauma and generational pain, and people who have witnessed uh, that division, and luckily a lot of us were not in that place, but people who have witnessed that division, who have moved from this land to that land, तो वो जिस मिट्टी के हम बने होते हैं, वो उसकी जो पुल होती है, उसकी जो कसक होती है, वो बहुत जनरेशन तक वाइब्रेट करती है. think about for a second, if you had lived 3 lives in one country, 3 lives in that area, 3 zindagiyan, how would you feel? And you have memories for past lives. How would you एग्जैक्टली feel? करवीर जी, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप उस मिट्टी से बने हैं तो वो पुल आपकी लाइफ में हमेशा If रहेगा. I इट reminisce, डजंट मैटर व्हिच पार्ट अगर ऑफ द मेरी वर्ल्ड यू याददाश्त गो. इतनी जबरदस्त है, मेरे को याद है, मेरे पुराने जन्मों की जो बात मुझे याद है, ठीक है, तक्षशिला के उसके मेरे बौद्ध धर्म की मुझे सब कुछ सारी बातें याद है. मैं अगर जिंदगी की अपनी बात याद, मेरे को फ्लैशेस उठते हैं. मेरे लिए तो पुण्य भूमि है. And I'm not bound by the names. Now these names, this has become Pakistan or this. It is an extension of the same ancient land. राइट. ठीक सो है? वही मैं कह रही You हूँ. might आप color it. You एग्जैक्टली might color it with एग्जैक्टली the color of Islam. You might color it as fine contours of a different nation of Pakistan. वो बात अलग है. उसका क्या होगा? आप इसी जन्म से सोच रहे हो, इसी भाई तुम यहाँ भारत में, मैं भारत में पैदा हुआ, तुम अगर उसका क्या होगा जिसके पुरानी बातें याद हो कुछ?
No, no, हैं? I totally agree But with that, think about Karamveer it for a ji. It's second. not, आप इस जन्म yeah. से सोच रहे हो, दूसरे बंदे किसी और जन्म से सोच रहे हैं. Anyway, I don't want to get into it. It's So not about me. I let's don't want to talk about myself now. yeah, let's I rotate. think I'm done. I didn't want Neetaji, to if talk you're too much. done, can we rotate? Yes, Or you want please. you want to complete? नहीं आई सी आई मैं आपकी भी बात सुन मतलब मैं गुप्ता जी की बात मैं सबकी बात सुन रही हूँ और कोई मुझे नहीं लगता कोई अपनी जगह गलत है बिकॉज आइडियोलॉजिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे हम नहीं हो सकते हैं